Trade and Imagination. Welcome to the 17th edition of South Asia's largest toy trade fair. A very warm welcome to esteemed international buyers from across 40 countries, all the exhibitors, traders, manufacturers, artisan sector, our brilliant domestic innovators and business visitors. On behalf of Toy Association of India, it's an absolute honor to welcome you. Ladies and gentlemen, it's time to start the seminar. We have a legend personality, Mr. Steve Rees. I request everybody, put your hands together. I request everybody, put your hands together. Mr. Steve Rees is one of the most respected global names in the toy industry. He is a consultant, author, and CEO of kids brand Inside. Congratulations, Mr. Steve Rees. I request again, put your hands together and very warm welcome, Mr. Steve Rees. It's going to be a very special masterclass and seminar by international toy industry legend. I request him please come up on the stage. And I also request Mr. Amitabh Kharbanda, please come up on the stage. I request everybody, put your hands together for Mr. Kharbanda. तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए. हमारे बीच में बहुत दूर से कई माइल से इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं. Everybody, again, put your hands together. Thank you so much. Proceed, please. Hello? Perfect. There we go. Good morning, everybody. Hopefully we'll get the presentation up and then we can begin. Okay. Hello. Okay. Please play the presentation on the screen. Yeah. Yeah. Okay, guys. So, as you heard, my name is Steve Rees. I am a toy industry lifer, so I'm probably never going to escape. Thank you. Which is a good thing. Welcome to the talk. We're going to cover a few things. We're going to cover sourcing and manufacturing. We're going to cover the exciting world that we live in today, and then we're going to look at how to sell toys internationally. So this is me. I used to work for Hasbro. I started my toy career for Hasbro. I managed a lot of different brands, including Play-Doh and Monopoly across Europe. Then I did a startup, which was reasonably successful, and then I've been advising toy companies around the world since maybe 2010. I've been coming to India since 2013. It's been one of the greatest adventures of my professional life, so thank you to all of you for having such a magnificent country. When I first came here, actually, I was mostly looking at factories and factories that manufactured other people's products, and then increasingly today I find myself looking at products that have been designed and created here in India that are looking for export. So it's developed a lot, and it's been great to be on that journey with you all. So toy sourcing or toy manufacturing. So I'm just going to set the scene here. I used to help people find toy factories outside of India before the rest of the world knew that India made toys. And always the only thing they cared about was cost. If you can save me 10% on the manufacturing cost, I'll talk to the factory and maybe I'll consider moving. And so when everybody was already in China, they already had really good factories, so they would only move if there was a cost benefit. The thing is, though, that there's an underlying presumption behind where we were, and that's capacity. So toys require a lot of labor, a lot of human beings to stand there all day doing repetitive tasks. That's how the manufacturing works for toys. If you don't have capacity, you can't make them. And if you don't have capacity and you can't make your toys, you're not in business. And I think what a lot of toy companies found last year with the Trump administration tariffs in the USA threatening 145% tariffs on China, it was almost an existential crisis for the toy industry globally, because suddenly they were faced with not being able to make the toys that they needed to sell. So I have to talk about China a lot. I know that you care more about India, but I have to set the scene for where India's opportunity is by talking about China. So China's been this amazing powerhouse of manufacturing all the time that I've been in the toy industry. And it's not necessarily going away, but it's definitely changed.
It's such a different country. Amitabh and I were just talking about how it's totally changed. So before we even went to China, I spoke to some people older than myself, and they told me that the manufacturing for toys has fragmented. So in the 1970s and early 1980s, you would manufacture in Hong Kong, in Taiwan, maybe in Haiti, in Mexico. You would manufacture everywhere, even though it was very, very inefficient. And then what happened was China opened up. So I'll spare you the politics, you probably know the history, or even it's not so important, but China opened up from being a very closed society. And they suddenly introduced hundreds of millions of people who'd been literally, and I'm not exaggerating, literally starving to death. Tens of millions of people died from starvation in China because they didn't have enough money, they didn't have enough food, and so they suddenly came into toy manufacturing desperate for work. And there were so many of them that China developed into the world's manufacturing hub for toys and for nearly everything else. This picture you see here is actually the picture of China that I remember from my childhood. When you saw news reports from China, that's what it looked like. So a lot of people in very poor looking clothing, on very cheap bicycles, not an advanced society at all. And this is China today. So China herself has changed so much, and that's part of the reason that there's an opportunity for India in particular. It's a bit early on a Sunday morning, so I'm not going to bore you with every single statistic on this slide. But basically what these charts show is China's massive reduction of poverty. Actually, never before in human history have so many hundreds of millions of people been taken from abject poverty to virtually middle class. You can see that poverty declines, life expectancy increases, and all of these are really, really good things. The Chinese people have benefited from a magnificent economic miracle. But my argument would be that if you looked at China today, it is now more likely to be a place that should make real cars versus toy cars. I'm trained in research originally, so I like charts and I like data. If you're like me, the chart on the left, which is India's population demographic, is what a population pyramid should look like. So it's almost a perfect triangle, not quite, but almost a perfect triangle, which means you've got a lot of young people coming through who can support the more limited number of old people that you have, and that's a really healthy thing for society. On the other hand, you have China, which is almost the definition of, unfortunately, of an unhealthy structure of a society. So you can see that there's nowhere near enough young people, and by the way, this data is based on official statistics, and it's kind of widely acknowledged that Chinese government statistics are, shall we say, manipulated for whatever reason. As are all government statistics, let's be honest, apologies to anybody from the government. But in this particular case, there's probably even fewer younger people than this chart shows. And if you actually go into a factory nowadays, a Chinese toy factory, there's not a lot of young people. You know, they tend to be maybe my age. You know, they're in their 40s or in my case 50s. There's some data here which proves the case. And so basically where China entered manufacturing having a huge abundance of labor that was very cheap, over the course of the time, you know, personally that I've lived through, they've gone from having an abundance of cheap labor to having a not abundance of not cheap labor. So, you know, going back 20 years, maybe the production line workers in China might have been on, say, $200, $300 a month. I was talking to a Chinese factory owner in January at the Nuremberg Toy Fair, and he told me that he was paying $1,000 per month plus $300 in social payments, which is kind of like not really a cost benefit. You could find that in Europe, you definitely can find it in India, you could find that in Mexico. And I guess the other thing is that things aren't really getting better. So this is official UN population projections, which show that China's population is going to reduce because there's not enough children being born, the one-child policy, and all that kind of thing that we know. So China's role in the world, and especially in our world of toys, is definitely changing. Sorry. Of course, it doesn't mean that China's leaving the toy business. They're still amazing at manufacturing. It's the smoothest experience you can have. They also have the world's second largest
domestic toy market. So I think you're obviously going to find that it makes sense to manufacture in your local market for those products. Maybe where you can automate for certain types of toys, China's going to retain a lot as well. So it's not that China's leaving, it's just that their role is going to change. Evidence. So I have some really good quotes from some really big toy company CEOs, but I prefer not to use their data, although it's in the public domain. If you want to search, you'll find it. But here's 3 media articles basically showing this trend. We all know this, so I don't think we really need to prove it. So where else could toy manufacturing go? Let's start with labor costs, because labor is such a large component of toy manufacturing. So here you can see the developed countries, Germany, the United States, my home country, the United Kingdom. It's very expensive to employ production line labor. France, known to be a very protectionist country, still not quite as high labor costs, but still seen to be uncompetitive, to be a real hub of manufacturing. And who's next in the queue? China. So for the we're not in China anymore for the reasons that we were originally. It's totally changed, and this slide proves it. And obviously, you may guess that I've designed the choice of slides to encourage India as an option for manufacturing. But I'm not making this up. As you all know, India has very, very cheap labor rates compared to the rest of the world. Clearly, there's a massive opportunity here. One of my observations would be, so since I first started coming to India, maybe like 10, 13 years ago, I would say that India and Vietnam back then were here. And Vietnam has maybe gone like this, and India's gone like this. So India has a lot more opportunity here than it's taken so far. But you can see just purely from the data and the stats, there is nowhere else in the world that has a comparable workforce to India. If there were to be a new China, one new China, it could only be India. But yet there's not quite enough toy factories of export level. And I know it's debatable what's export level, so I'm using the factories which I've kind of encountered and worked with. My slide's a little bit out of date. You can probably double that. And I think that the potential is to like times it by 1,000, but we're not quite there yet for a lot of reasons. And one of those is the growth of your own domestic market, which has obviously been a really positive thing. And then when you think about, okay, if it's not going to be India, where else could that manufacturing go? Vietnam has been the primary beneficiary, probably for 2 main reasons. One is it's a more similar society to China. So if you own a factory in China and you want to find somewhere else to set up factories outside of China to reduce your risk of being only reliant on one country, where can you go? Vietnam, it's kind of officially communist, but it's also kind of allowed some capitalism, the same as China. It's geographically closer, it's culturally closer. So Vietnam, and then also, to be fair, Vietnam has delivered to a fairly good degree. So Vietnam's been a major beneficiary. But as you can see, there's 100 million people, more or less 100 million people in Vietnam. So it's not enough to be the world's manufacturing kind of powerhouse. Thailand, Indonesia, these are both options. Indonesia actually probably currently is the hottest, the one that's growing the most. It has some of its challenges too, but it still doesn't have a population the size of China or India. So it's only going to be part of the solution. It can never be, the major part of the solution. I think I've kind of said most of this, but I think it's important that I make a point about India for your benefit. So I am the biggest fan of India as a toy production hub you'll find. I've been coming here for 13 years. I introduced maybe 4 or 5 out of 10 of the world's biggest toy companies to India for manufacturing. But there's reasons why India has not grown at the same speed as Vietnam. There's more friction to working here. If I compare working with China, so if my customer in the USA sends a sample to a factory in China, it's there in 3 days. And then the cost comes back within a week of sending the sample. If they send the sample here to India, sometimes, not always, but maybe 2 or 3 weeks later, we're still trying to fight to get the sample out of customs. Like all these small things for India are holding up the big things.
And I think that's the thing. Once we can try and fix some of these overall, then India's only going to go up, and it's going to be an amazing thing. Okay, look, some things are fixable and some things aren't, and especially if I look at the ease of doing business index, which is a global measure. When I first came here, India was like 130, and it's now in I think in the 60s or low 70s. So things have improved a lot. But I think India really has to step up to grab this opportunity. It's kind of like a once in a generation thing here. Okay, that was the easy part, because I basically just told you that India has a big opportunity. Now I have to talk about politics. So thankfully I've got some protection in case anybody doesn't like it. But I'm not talking about party politics. I'm talking about geopolitics and how it affects toys. And obviously, yeah, it's a big thing at the moment. I think the biggest thing I would say is that, if you're of my generation, I remember the Berlin Wall falling. I remember watching it on TV, and it opened up this glorious period for the world of economic growth, of relative peace, and of a world dominated by one hegemonic power. And that's changed, and that hegemonic power is kind of semi-retreating from the world in a very interesting and headline-grabbing way. And that's changed the world in a lot of ways, but specifically for the toy world. And we have these global supply chains that we take for granted, which actually relied on that world order. Global power is rebalancing, arguably for the first time since World War II in this way. We've got the military and political rise of China, the remilitarization accompanying that of Japan, India's massive economic growth, the fragmenting of the West, and the USA not quite knowing whether it wants to be our friend or not. So there's been a lot of disruptions in recent years. We had COVID, then we had the container shipping crisis where it cost 10 times more to ship than it had done before. That led to an inflation crisis. It led to a slump in consumer demand in a lot of the big toy consuming markets. We had the Trump admin tariff cost last year. Then we had the crisis in the Middle East, the war in the Middle East. And the problem is, based on how the world is now, that's not going to be the end to it. Okay, maybe the last major pandemic which affected the world was Spanish flu 100 years ago. I hope it's 100 years till the next one at least. But there are other things that are going to come, and we know that now because the world is just more complicated. I had to be very careful about this slide in certain audiences, but let's just say that there's a chance of a geopolitical crisis over Taiwan. If that happened, all of your phones would go absolutely crazy. I think it's quite unlikely myself, but that's only my opinion. But if there was a conflict in the Taiwan Strait, China production at the very least would be very disrupted. It would have to go a long way round. That would cause container shipping problems again. Maybe there would be sanctions. Maybe production would just be closed. Like it would be a ridiculously large-scale problem, which would be your opportunity. The thing that you find though is not just the reality; it's also the risk. So because it's now a risk, major retailers like Walmart, it's I forget last time I checked their market cap, but it says like 700, 800, 900 billion market cap. So it's driven by finance professionals and legal people and auditors and people whose job it is to reduce risk. And so they see this as a major risk. So Walmart, for example, have pushed very hard, as most of you know, to manufacture more in India as a major source. So a lot of these things are driving in India's favor, but you have to be aware of them. War in Europe, I think, has had a lot less impact probably on the toy market. One thing it did do, though, was there was some growing toy production in Eastern Europe, because Eastern Europe production labor is quite cheap. Maybe I need to get myself one of these costumes. So it kind of shut that off, because Ukrainian labor before the war with Russia was actually about the same cost as India, believe it or not. Very, very poor country, and now all those people who were making toys are unfortunately fighting. But that affects supply and demand. The war in the Middle East, I mean, I guess the big impact here is some shipping disruption, but also oil prices. So obviously if oil prices go up, plastic prices go up, and this has been a major problem. It seems to have calmed down. I think hopefully both sides have realized that, or all sides have realized they've got a lot to lose.
but I wouldn't count on it. You know, it's a very volatile part of the world, and there's a lot of forces acting there in a way that doesn't suggest conflict, resolution, and peace. So let's keep an eye on that. And the thing is, like I say, these aren't the last ones. So if I came back next year, probably I could add another geopolitical crisis to that slide that I showed you. So I think we have to be aware of this, because it's really going to change how the world works, but also where your opportunity is. So, having done the politics part with nobody verbally or physically attacking me, I'll go back to safer territory now. Toy sourcing strategies. So really, there's a few options. Toy companies can stay in China, and I know some people who are doing this, but it's so stupid. This is like the places like Thailand, Indonesia, Malaysia, I think actually. Yeah, and then the other thing is self-manufacturing and nearshoring. Now, obviously, from your perspective, India's market is growing, so you have a lot more domestic consumption, and that's a trend which is likely to only continue. But also in all the other countries around the world, they have the same push towards nearshoring. What they don't have is your labour costs. So I think that's a real opportunity here. If I was personally in manufacturing and I was in India, I would also have my own brand that I'd be trying to sell into retail, but that's a whole other story. One thing that we have to think about is technology in this space. So when I first started presenting on this topic, this was a long-term thing that one day technology might take over from people on the production line. And the reason why is, so the way, I'm going to talk obvious things for some of you, but to explain so everyone understands. When you manufacture toys, a lot of toys come and go. So if I make a car, the same car maybe will be selling in the market in 10 years' time. So I can invest in automating that production, and I can get technology to make it very, very efficient. So I do one upfront cost, and then I have lower labor costs going forward. The issue with that in toys is the product comes and goes, so you can't really historically automate very cost effectively. What might change is, so right now there's a lot of revolution going on in robots. If a robot can go from just being able to do this, to being able to do what I can do with my hands and you can do with your hands, driven by AI, suddenly the manufacturing doesn't necessarily need to be so labor reliant, and then what you don't have is such a need to find cheap labor. That's probably a threat in some ways for some of you guys, but it's also an opportunity also. So like if you think the way that the toy companies worked in the big Western markets, you would have head office, they designed the toys, they sold the toys, you would have the warehouse, and then you would have the manufacturing in home. I'm talking about like 40, 50 years ago. And then all of that, all of that moved to China, and then now it's spreading out. But eventually, if you can produce without labor, there's no reason why your manufacturing unit can't be next to your warehouse again for maximum efficiency. So I think it's quite likely now that that could happen in the next, 10 years? I don't know. Might be 5 years, might be 20 years, but technology is moving at such a pace, so something to be aware of. So now I'm going to completely change tack. So we spoke about manufacturing, we spoke about geopolitics. Now we're going to talk about how to sell toys internationally. Probably the thing I get asked about the most is how do we sell our toys into other countries? And so I'm going to start by giving you a couple of hard truths that you have to understand. Someone was telling me yesterday competition's really tough in the Indian domestic market. Well, the reality is competition's tough everywhere. So you fundamentally have to have good products, good pricing, good marketing, and you need to be really good at forming relationships. And if you do all of those things, really there's no other secret than that. Just to go into a little bit more I know some people in the audience maybe know more about this than others. The distribution models that you can use in toys. At this end we have the hands-on method, and at this end we have the hands-off method. So hands-off is like you give an idea or a concept or even a toy to a company in a different country, and they do everything. They manufacture it and they send you a royalty check, probably somewhere between 5 to 10% of their net sales. The good thing for you is then you have no inventory risk, you don't get involved in the work, you don't have to deal with the insurance, you don't have to deal with the product liability, you don't have to deal with very aggressive retailers. And at the other end of the spectrum,
you have literally trying to sell to every retailer in the world yourself. And so I think the secret here is, so I work for Hasbro, which is a big American toy company that is currently, I think, about 113 years old, and they still don't have sales offices in every country. And even when I was there, they were opening new offices in Europe as a developed market. So the reality is, you're probably going to start off somewhere nearer this side, the hands-off method, and eventually you can work yourself to this side. And so I've helped people at all ends of this scale. But I think the important thing is that you choose the right one for where you're at, because you can very quickly get bogged down in complexity and risk and problems if you jump right to the end of this. You know, if you just decide I only want to sell to retailers, I want to have control of everything, I would say that you're probably going to need to recruit some people in the local geography to help you, who understand the local rules, who have the retail relationships. But somewhere in your distribution journey, you're going to find yourself on this spectrum. I'm not going to go through all the detail on all of these, because some of them are more relevant than others. So I'm going to skip the licensing one. I just explained it. Basically, you give all the IP, the rights to someone else under a license, and they pay you. That's it. Distributors. So I've never ever met anybody who says that their distributor was doing a good enough job. Maybe occasionally they'll have a good year, and the reason for that is a distributor's job is to take products from multiple companies. A smaller distributor might have like 5 or 10 product ranges, a big one might have thousands. So they are never ever going to be as focused on your products as you are. So fundamentally their job is to disappoint you almost, because they're never going to be as focused on your products. But if your product is strong enough in their portfolio, then they will push it because they have a vested interest in it. But they look at literally, I mean, I've been a distributor and I've sold to a lot of distributors. They're looking at 1,000+ catalogs a year. And so like they have a lot to choose from. So you really have to expect distributors to fail to focus on your products, but they have access. They almost have instant access to the retailers you want to sell to. So they're almost like a necessary evil. And I have a lot of very good friends who are distributors. So I don't mean this in like a judgmental way. It's just the structural makeup of a distributor. Normally they can get products into nearly every retailer in the market. They can take stock risks for you so you don't have to. They deal with excess stock. It's a really good solution, but you'll never be entirely satisfied, to be honest. So sales to retail via sales reps. In some countries, this is the primary way that you sell to retail. In some countries, it's not. So the USA is a very sales rep-driven culture for a lot of historical reasons, but not least of which because it's a gigantic territory. And to be a distributor and take stock risk and to deal with logistics on distributor margins is not very viable. So you actually find there's not many distributors in the USA, and if there are, a lot of them kind of come and go. But sales reps are everywhere. So what a sales rep is going to do is a sales rep is going to take your product or your product range along with a lot of other product ranges into a retailer. They already have the relationship. The buyer trusts them. If they put your product in the products that they're going to present, they already believe in it to a degree, and that retailer trusts that sales rep. So you have a very, very, very good chance. Let's say, for example, you suddenly decide you want to sell to Walmart, probably the least reachable retailer in the US, because everybody wants to sell to Walmart in the world. So there's like 10,000 people trying to sell to that Walmart buyer, at least. This sales rep can get you in front of that buyer and can get the product considered by that retail buyer. And in return, they're going to charge a percentage of sales. Normally in the USA, it would be 5% for mass market or 10% for smaller retailers or specialty. But that's all they're going to do. So you have to do all the logistics, you have to handle the product liability, the inventory, but it can be a good way to open doors. And even a lot of established companies, especially in the USA, still 10, 20, 30, 50 years after founding, work with a lot of sales reps. The problem is the rep doesn't get paid unless a product sells. So the moment, if they start trying to present your product and they don't get any interest, they will drop it. There you go, like that. Because fundamentally, they've got to get paid. And some of these guys, if you're handling the Walmart or Target account in the US for multiple medium-sized international companies, your turnover is like millions. So these guys have a lot of power and a lot of choice.
but they also have a huge opportunity cost, so they'll drop you very quickly. There are some markets where the sales rep model doesn't work also. So for example, Germany is a really good example of a market that doesn't tend to have sales reps because a lot of the retail buying is decentralized. So you would need such a big sales team versus the size of the market. So, you know, if you go to Germany, you're probably likely to need a distributor. If you go to the US, North America in general, you're probably likely to need sales reps. Or you could just cut all of that out and you could phone Walmart and you could be one of 10,000 people trying to sell to them. Now look, people succeed at this every day. There are ways to do this and make it work. I think in your particular case here, the advantage you have is Walmart have a corporate directive to source more product from India. So I think you can much more easily here talk to you know, people when Amazon was still a new thing, and ordering something and being amazed that the product came to my desk. Now in India, you can order and someone delivers to you in 10 minutes or whatever, the quick commerce. So it is a big opportunity. In some markets, I won't name names, but a major German company told me that 50% of their global, 50% of their global revenues were on Amazon. So like it's a gigantic opportunity for you, and you can list today. And also, frankly, you know, there's good ways and bad ways to do Amazon, but you'll probably find it easier than trying to sell to a big retailer. Obviously, there are some challenges with profitability, and I don't speak to many people who say that it's a very easy platform when you've got a problem to deal with. Like, there's pros and cons, but if you want to reach the world from India, you can do it on Amazon relatively straightforwardly today. And I have a number of clients in these halls who have done this with great success, like a few of them who sold millions and millions of units on Amazon around the world. So I've been talking a long time, and I'd rather leave time so you can ask questions if you like, than I just keep talking at you, and I don't know if it's helping or not. But the sales process is quite distinct in the toy industry. Now, I can't tell you how the toy selling cycle works in India, I don't know. But I can tell you in the USA, in Europe, which is a large chunk of the volume nowadays, it has a set cycle. So we're currently in July. Toy companies are now finalizing their 2027 products, and they're going to start presenting them to big retailers in September at the LA Toy Previews in Los Angeles. And then the rest of the selling cycle, roughly 6 months, will go from September through to March. And so you're always too late or too early normally for one selling cycle. But like, for example, let's say you wanted to sell into those markets for 2027, you need to be ready to go very soon. I'm going to skip the rest of that detail. Just a few really basic fundamentals. It's really old-fashioned, but in some ways the toy industry can be old-fashioned. You need to have a product sell sheet for every product. I know most of you will have a catalog, and in effect that's what your catalog does, is every page is a sell sheet. But retailer needs some very basic information to even consider your product and to understand where it fits. And if you don't give them that, you're basically creating friction, which makes it less likely you're going to get a listing. So you need to have a product image. It needs to be high quality. It should have ideally in the packaging. And if you don't have packaging yet at the time that you're selling, which nobody ever does, you need to have a good representation of packaging mocked up. You need 3 or 4 bullet points to sell. If you put 10, they won't read it. If you put 1, it won't seem like enough. Honestly, I've tried and tested this over the years, 3 to 4, maybe 5 max bullet points. And things like great toy is not really very helpful. You have to show the benefits to them. So for example, let's say, just an easy example, I mentioned Amazon. Let's say you've sold 10,000 products on Amazon and you have 500 reviews at 4.7 or higher. There's a bullet point. So what you're saying to them is, there's a reason why you should buy this product. It's already been proven to sell. The social proof is there, so you should buy in. That's what these bullet points should be doing. Not describing. Description can come, and they'll see it from the picture anyway. Is there a trend or insight? What's the competitive advantage or difference?
And for the retailer, like, how do they know that that product will sell off their shelf if they put it on their shelf or out of their warehouse? And then there's a few mandatories at the bottom. So what's the age grade? What's the price point? If in some countries you can talk about price point, in others it's not legal, but I won't get down into the detail of that. Video sizzles, so like, I mean, it's so easy to create videos today. There's some design students exhibiting here who I was talking to yesterday, and one of them had a product description video that was like world class. I've not seen a billion-dollar toy company do it better. So it's so easy to do this. If you want to just quickly get the impression across, like a 30-second, 60-second sizzler, no longer than that because the attention will fade. But these are the basic sales collateral, the sales materials that you need. And if you don't have these, you're probably not ready to go and start talking to retailers. If you want to get labeled in their mind as an amateur, turn up without this, and then they will instantly go, amateur, I can't talk to them, I can't take them seriously. Just be aware of one thing. Many products are reviewed and few are chosen. So we've all been to toy shows, like this show, like other shows. You meet a lot of people, there's a good vibe, there's a good buzz, you meet a lot of people, it feels like you do a load of work, and then you think we're going to have a great year or we're going to get lots of business. And then the person who's seen your product has also seen another 400 companies' product, goes back to their office, and they can maybe take product from, say, 10 companies. So they start off with this many, and it comes down to here. So always, 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 after these shows, the thing that really counts is the follow-up. And there's different methods of doing this. Some people will follow up before the show is finished, and then they follow up the follow-up next week. Some people leave it until the dust has settled, but you have to follow up because nothing is sold. Sorry, it's not quite true. Normally some orders are written, but like with big retailers in particular, the orders are not written at the show, so you have to follow up and go through their process. Just because there was so much text, I wanted to have some nice pictures. So this is a list of trade shows. It's not every trade show, but this is most of the more important ones for export, I would say. It's interesting. I mean, before COVID, Hong Kong was like the must-go place, and now that's much less so. And the US used to show to mass market in Dallas in September, and now kind of like Hong Kong and the Dallas show combined in Los Angeles. So if you wanted one show to reach the mass market buyers in the USA, but also in quite a lot of the world now, probably the LA previews in September. And yeah, but I mean all the other shows are good and have their purpose. Also, by the way, I mean this is an amazing show. Like I've been here, I think this is my third or fourth time, and I was surprised when I first came how big it is. And I think a lot of international people will be also. So I'll do my bit to try and help you promote it and bring more gringos like me. I'm going to skip these just because of time. I'm nearly at the end now. If you did want more information, I have a few free information sources. So I have a LinkedIn newsletter which is free to subscribe. There's I think there's about 6,700 people on that. I've got 3 in total. I think there's about maybe 10,000-15,000 on those. It's free, mostly written by me with a little bit of help for the grammar from AI, but it's not AI slop. Free to sign up. Just go to LinkedIn and search Steve Rees Toys or Toy Industry Journal. I put some articles out on the blog, toyindustryjournal.com as well, which don't always make it onto LinkedIn, so feel free. I also, sorry, apologies, but one quick sales pitch from me at the end, and then we'll go to your questions. I used to help people with their distribution, and I spent most of my time with that. And then I started helping people with finding new manufacturing. And then I was doing the whole chain, and then people said, well, the problem now is you found us manufacturing, and then you found us distributors, but now we need to hire people in each country. And so now I probably spend half my time as like a recruitment consultant. So for people in this hall, I've just hired like head of sourcing in Ningbo in China, head of sales in UK, in USA, head of sales in Hong Kong. So if you do want to expand internationally and you don't know where to find good people, I'll be able to help you. Obviously I do charge, but if that's of interest, yeah, feel free to get in touch. And that's all I have in the presentation. So
I want to leave lots of time. If you have questions, I will try and answer them. If I don't know the answer, I'll try and make it up in a good way. But yeah, over to you. Or a small or a medium scale company in China or globally, right? So for us, being able to cater to the likes of Walmart or Target, etc., repeatedly, consecutively for various multiple products is rather difficult. Uh, what would you suggest as a strategy to a company that is doing, say, $1 to $2 million worth of sales in India? Uh, how would how can they get into the export business? It's a good question. And it's always a little bit chicken and egg, right? So in order to be ready, you need to have the revenue to drive the resources to be ready. But like I say, I mean, all the intermediaries that I just spoke about, they can help. So like, you know, there's distributors in nearly every country. There's sales reps in nearly every country. These people can help. One thing that's a bit unusual in India versus China was because China was kind of a little bit closed, Hong Kong grew to make things easier to trade. And so then you got these trading companies, some of which became huge, like Li and Feng, tens and tens of billions. And so they became like product amalgamators. So they fixed whatever a smaller company couldn't do, they fixed or filled the gaps. So I think, you know, India's still quite early in that journey, and I think some of those companies will rise as well. But also I think like I mean, I mentioned Walmart and Target a lot because that's normally what people want to know about, the biggest and the best. But like, there's a lot of opportunity. There's a lot of retailers all around the world. So, you know, my country, a really good example I'll give you is John Lewis. It's like in global terms, a small retail chain is maybe like 40 stores. But it's really nice stores, and there's a lot of consumer trust. And these guys can order thousands of units still. So I think sometimes starting in fashionable places, and I said the UK just because I know it, but starting in fashionable places, don't just focus on the biggest. Go and build up like the base of a pyramid, and at the very top should probably be those big retailers, I would say. Hope that helps. Thank you. Couple of more questions related to your presentation. So you had mentioned Germany. Germany does have organizations like Vedes and ID Spiel, which can be a good starting point for Indian companies to try and sell in Germany. Could you throw some light on that, please? Yeah, sure. So, like I said, in Germany, the retail buying is quite decentralized, and it's also very unusual because it has like I'd have to double check, but I'm pretty sure it's got the most independent toy shops in the world. So every town, even a small town, has its own local toy shop. So the challenge then is how do you supply? It used to be thousands of thousands. I think it's maybe about 3,000 now. So how do you supply 3,000 individual stores which aren't really joined together? The answer is via buying groups. So Vedes and these places which Amitabh mentioned, they basically help you to amalgamate. So in effect, you get to access 3,000 stores via them. They do have a lot of people trying to sell them product, so you have to try quite hard to catch their attention. But yeah, eventually they put you in front of all those people, and those buying groups do exist in other countries as well. So yeah, but if you work with a good distributor, they will also have a closer relationship with the buying groups. Yeah, and also I mean the US, for example, has something like approximately 2,000 mom and pop toy stores spread across the country. And so there's some of the same kind of opportunities there as well. So. Thank you. One more thing you had mentioned was in your pitch you should talk about trend insights. So India has access to Instagram, but not to TikTok. And TikTok is one of the. How would you suggest, with the absence of TikTok, how one can go about catching up on the trends? I think there's a few things. I think firstly, look at retail in other countries, because often what works in one country will work in others. Not always. There's some cultural differences,
But often, you know, fidget toys or yo-yos or, you know, going back in time, any of these things tend to work across different countries. They're compelling for a reason. So that's one thing, is actually to see what's already in the market in other countries. I think the second thing is, I mean, AI, like the large language models, ChatGPT, Copilot, Claude, whichever one you use, they will troll a lot of data to help you find this. So yeah, I would just constantly be on those, and also just like talk to people. Like what I find personally is there's certain people I know who are more out front, toy designers who are more monitoring this stuff all the time, and make these guys your friends. You know, ask them, hey, what's coming next? What can we work on together? And a lot of these people are, you know, easy to find in the public domain. So if you don't have TikTok, maybe you can't search the TikTok analytics so precisely, but you can talk to a lot of people who can. Thank you. Hi, Steve. Thank you for the insights on sourcing. There's one question about design, product development. How does international buyers see India from that angle? And what's your thought about it and how we should prepare to get there? I think, I mean, the obvious comparison, unfortunately for everybody, is China. And what China as a hub is not great at is true innovation and ideation. But it's very, very good at taking an idea and turning it into a physical product. So like ready to manufacture design. And also they took a lot of the sort of the nuts and bolts of that process away from the toy companies. So when these toy companies come to India and other places, they have an expectation that they'll find that because they don't have the resources in-house anymore. So it is a little bit of a challenge. The thing is, what you very obviously have here in India is gigantic engineering expertise, maybe the most in the world, and really good, highly qualified people available at wages which are very competitive. So it's not the technical understanding, it's the sector-specific understanding of how the creative process works. But again, the one thing that I've seen that maybe I would say, and I work with I work with a lot of Indian factories over like 10, 12 years. It's outsourcing certain parts and buying in the expertise. So like there's a world of toy designers out there who all day do work for hire or inventing for the big toy companies, the Mattels, the Hasbros, the Tomies, whoever it is. And they are resources that you can buy in for a daily rate. Okay, it's a daily rate that's higher than you know, what you would pay someone here, but it's probably priceless because in the end, what's held India back to a degree versus say Vietnam is the ability to close that gap a little bit with China, and I think it's important to sort of embrace that. So yeah, I mean, and there's two forums where you can find those creative people. So in the UK there's one called Mojo Nation, and in the US there's one called People of Play, and via those two kind of networks and organizations you could access 1,000 creative people globally. So thanks. Anyone else? A couple of follow-up questions. Now, India and China are two separate markets, two separate countries, two separate strategies per se for sourcing as well as for selling from India. If I look at fashion, where India is quite strong, clothing where India is quite strong, India still focuses on a lot of natural materials. So how do you think sustainability, how can we leverage India's strengths to cater to the international market? I mean, it's a big topic, sustainability, and I'm not an expert in it, but I do know what retailers are looking for, and you know what toy companies look for. And I would say it's one of the criteria they look for, but there are other ones that come first. So like number one always is cost and reliability. Those are fundamentally the things that will drive manufacturing decisions. However, they all have, you know, ESG, they all have sustainability programs.
It's just that some of these big companies care about it more than others, and for some of them it's more of a priority than others. So, but it's definitely one of the boxes that needs to be ticked, and I do think that is an opportunity. The question is just like, in the end, this is such a price-driven category. Is the consumer willing to pay more? And in most cases, the answer that we're told by the retailers is no, not really. So there are some niche opportunities, certain types of retailers. For example, John Lewis I spoke about in the UK, Marks and Spencer's in the UK. You know, there's all these people around the world who have certain things. So I think, and also the one thing we know is a topic, it's not going away. And I've seen it, sometimes it bubbles up to be closer towards the top priorities, and then it bubbles down again. Economic priorities normally overweight. But yeah, I mean, it's definitely an advantage. I think the other advantage, by the way, which people don't necessarily realize that India has is, I cannot tell you how many problems I've had over the years, and everyone's had over the years with Chinese factories, with the audits, with the ethical audits. So if I work for a big Western retailer, I don't want headlines saying that I'm making products in a sweatshop. I don't want headlines saying I'm using forced labor or children in my manufacturing, or that the factory's unsafe. So that is really, really important. Hence the fact all these programs exist, ICTI, SEDEX, etc., etc. And in China, it's always a tightrope, because they don't have enough labor, and the labor comes and lives in the factory away from their home, and they have nothing else to do apart from work, and they want the money. So they're always on the tightrope with infringing overtime, you know, all these kind of problems. You don't have the same problems here in India that I've experienced. Maybe someone can find some more problems, but the workers are very protected here in comparison with China. And so actually that's a major box to tick, which is probably, currently at least, higher up the hierarchy than sustainability, unfortunately. Thank you. If you look at the future, right, so Vietnam, if you see the growth of Vietnam in the past 15 years, it is all on account of support from China. China has extended itself into Vietnam. What do you foresee the chance of that happening in India? Because if China has got the technology, has got the skill set, has got the designs, the supply chain, India has got the labor to execute it, it should be a natural fit. What do you think is the probability of that? What is you talk to so many people, how do the Chinese feel about this kind of a partnership with India? It's in my nature and my values to be very direct and honest. So I will be. There's clearly an opportunity in theory, but it's a very different culture. And the Chinese factory owners I know, they don't understand India, and they kind of fear India a little bit. And the things which are so fundamental to Chinese culture, order, discipline, you know, they don't see in the same way here. You know, this is a much freer society. Personally, I think that's a great thing, but it does make it slightly more complicated in terms of that relationship. So, you know, so far, if I'm a Chinese factory owner and I'm going to open a factory outside of China, I chose Vietnam first, then probably Indonesia second, maybe like Malaysia or Thailand a little bit too, and probably India not very often. I actually think the opportunity is a different opportunity, which is actually, you mentioned all these other countries relying on China, and they do. And we saw in the pandemic when China was closed for production, but Vietnam was open, Vietnam wasn't really fully functioning because all the supply chain came from China. India is the only country in the world, I think, which could rival a supply chain and could in effect have satellites. So I think if we look forward 10 years, I think it's more likely India has a bigger share, and that you have satellites. So maybe like Bangladesh and some other countries are taking the components from India in the same way as currently Vietnam does from China. That is definitely food for thought, how we can make that happen. But yeah, very true that India and China are a totally different work culture, and the discipline you see in the Chinese factories, you do not see it in India. So I think we have to upgrade our work culture to be able to fit in with the Chinese quite a bit. Yeah,
I also think you have to chase where the opportunity is, right? And so the big opportunity is low labor cost. So the things which are currently really high labor intensity, that's where the biggest opportunities will be, because China can never come back on that. One, low labor cost or availability of labor? What is Both. more? Both, actually. Both. What would you rank higher? It's hard to separate them. I mean, if you go back to my first couple of slides, you need capacity, so you need people. So in the end, fundamentally, it's capacity. But as long as China's still in the game, there is enough capacity. But if China comes out of the game, then it's labor availability. You know, if you suddenly, so let's say last year, if Trump tariffs of 145% on China came in, like the whole global toy industry is trying to find other sources, and suddenly the only real option is India. And it would not have been pretty. It would have been very chaotic and disruptive and crazy. But really that's fundamental first. Thanks. Anyone else want to ask any question? May I ask anyone? No? I've sent you all to sleep, hopefully. Sure. So I'll share with my contacts at the show and then, yeah. Great. Well, thanks guys. I appreciate you taking the time to listen. I hope some of it was helpful. And yeah, I'll see you around the show. Everybody Cheers, put guys. your hands Thank you. together. Thank you. That was really very informative and useful session. Everybody, again, put your hands together for Mr. Steve Rees. Thank you so much. We appreciate your presence. Thank you so much again. And thank you so much, Mr. Amitabh Kharbanda, for gracing this beautiful, beautiful seminar. Thank you. And one-to-one question answer. We are waiting for the more guests, and also we are waiting for the governing body. In a while they will be amongst us, and then we will start the seminar. Thank you. से अनुरोध है, जितने भी खड़े हुए गेस्ट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जल्द से जल्द अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। Ladies and gentlemen, it's an honor and privilege to host for this wonderful mega event. भारत मंडपम की इस प्रतिष्ठित छत के नीचे 35 से अधिक देशों के व्यापारिक दिग्गज एक साथ 400 से अधिक भारतीय ब्रांड्स को एक साथ लाए हैं। 300 से अधिक बूथ खूबसूरती से सजे हुए हैं और आज भारत मंडपम एक ऐसे जीवंत ब्रह्मांड में बदल चुका है जहां व्यवसाय और रचनात्मकता का एक अनोखा संगम हो रहा है। आज यहाँ हम सिर्फ खिलौनों की कतारों को नहीं देख रहे, बल्कि हम भारत की रफ्तार पकड़ती हुई उन्नति को, आर्थिक शक्ति को देख रहे हैं। एक बार मेरे साथ सभी मिलकर भारत माता की, भारत माता की। भारत सरकार के बेहतरीन सहयोग से हमारे मैन्युफैक्चरर्स और लोकल एमएसएमईज की
कड़ी मेहनत की बदौलत भारतीय खिलौना उद्योग आज दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहा है। इस साल हम मेड इन इंडिया को पूरी तरह से ग्लोबल बनाने के लिए तैयार हैं और सभी के एफर्ट्स के साथ, सभी एग्जीबिटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड विजिटर्स के एफर्ट्स के साथ मैं चाहती हूँ इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये एग्जीबिशन आपकी है, ये इवेंट आपका है। Yes, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you on this beautiful exhibition, and congratulations to all the exhibitors, manufacturers and trade visitors. We unite over 400 Indian brands with business leaders from across 40 nations under one this iconic roof of Bharat Mandapam with 300 beautifully decorated booths. Bharat Mandapam has transformed into a vibrant universe where business meets absolute creativity. We are not just looking at the rows of toys, we are looking at India's roaring growth engine. Thanks to incredible government support and hard work of our manufacturers and our local MSMEs, and Indian toy industry is growing at the incredible pace, and this year we are taking Made in India globally. Bharat Mata Ki. And we thank to Commerce and Industry Ministry of India. We are very thankful to DPIIT Ministry of India and MSME Ministry of India. हमारे बीच में आ चुके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की टीम, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच है मिस्टर गौतम, तालियों के साथ करेंगे स्वागत। ई कॉमर्स आज हर घर की पहचान भी बन चुका है। अगर शॉपिंग की बात की जाए तो एक जाना माना नाम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। और हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर अभिषेक, तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर शुभांकर, मिस्टर विवेक और बाय हैक टॉयज एंड स्टेशनरी मिस्टर रोहित अवस्थी। और साथ साथ हमारे बीच में है कैटेगरी हेड मिस्टर रक्षित कुटियाला, तालियों के साथ करते हैं स्वागत। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने ही इस मेगा इवेंट को और खूबसूरत बना दिया है अपनी खूबसूरत प्रेजेंस के साथ। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ताई। वी आर रियली ग्रैटिट्यूड, वी पे ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईच वन ऑफ यू। और इस सेमिनार में, ये सेमिनार बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप अपने टॉय को हर घर में ले जाना चाहते हैं तो ये सेमिनार आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रेटजी तो ये सेमिनार आपके लिए है। ई कॉमर्स मार्केटिंग अगर जानना चाहते हैं तो ये सेमिनार आप सभी के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ताई की ओर से। थोड़ी ही देर का और इंतज़ार, आने वाले हैं हम सबके बीच में गवर्निंग बॉडी, हमारे प्रेसिडेंट साहब अजय अग्रवाल जी। अजय अग्रवाल जी के बारे में मैं बता दूं, वो 11th टाइम कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये दर्शाता है उनके कार्यों को, ये दर्शाता है वो किस तरह से इस एसोसिएशन को और टॉय इंडस्ट्री को जिस लेवल तक ले गए हैं। और आज ग्लोबली जिस तरह से उसकी पहचान है, 150 से अधिक देशों में भारतीय खिलौना जाता है। ये सारी मेहनत है आप सभी की, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज भारतीय खिलौना बाजार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज देशों ही नहीं विदेशों में पसंद किया जाने वाला, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है हमारा भारतीय खिलौना। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द एग्जिबिटर्स, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। आप सब की वजह से आज खिलौना उद्योग जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उन सब के पीछे आप सभी की मेहनत है, आप सभी के एफर्ट्स हैं, आप सभी का विजन है, और जिसे लेकर आप आगे चले। और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में आगे 200 देशों में भारत का खिलौना उद्योग ग्लोबली पूरे विश्व में अपनी धाक जमाएगा। एक बार खिलौना उद्योग के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और हमारी गवर्निंग बॉडी भी आने वाली हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। उन सभी के ही एफर्ट से इस तरह का सेमिनार और इस तरह का मेगा इवेंट संभव हो पाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि 17वां एडिशन है, यानी कि लगातार 17 सालों से ये मेगा इवेंट, ये टॉय बिज, ये इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस एक्सपो होता आया है। और साल दर साल इसकी प्रगति को हम देख सकते हैं। साल दर साल इसका व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। साल दर साल जिस तरह से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार
स्वागत करते हैं ई कॉमर्स टीम फ्लिपकार्ट का, जो हम सबके बीच में आए हैं और जिनके सौजन्य से ये सेमिनार होने जा रहा है, जिनके सौजन्य से होने जा रहा है क्वेश्चन आंसर राउंड। आपके मन में कोई भी सवाल है फ्लिपकार्ट को लेकर, किसी भी तरह की मंशा है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे बीच में आ चुके हैं विपिन निझामन जी। मैं चाहती हूँ एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे ताई के लिए, उनके कार्यों का हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर विपिन निझामन। सर आप कृपया करके आगे आइए, आगे बैठेंगे। आपका हम इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि हम इंतज़ार कर रहे हैं और मेंबर्स का। जब तक शुड बी स्टार्ट सर? ऑलराइट, बिल्कुल, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से साल दर साल टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस तरह के मेगा इवेंट का लेवल हाई करती जा रही है और पूरे ग्लोबली अपनी पहचान बना रही है। 200 देशों में से 150 देशों में तो हमारा खिलौना आज जा रहा है। अब वक्त वो गया जब बात लोग चाइना की करते थे, लेकिन अब बात आ रही है भारत के खिलौनों की। चाइना में भी हमारे भारतीय खिलौनों को पसंद किया जा रहा है। ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी तरक्की है। हम विटनेस करने जा रहे हैं अगले और 200 देशों के लिए, यानी टोटल 200 देशों के लिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सबकी ज़िंदगी में तरक्की लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ ही हम शुरू करेंगे। हमारे बीच में विपिन निझामन जी आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ एक बार आप स्टेज पर आएंगे सर। हम स्टेज पर स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां। मैंने पहले भी बताया कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अजय अग्रवाल जी 11th टाइम कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट है। ये बताता है किस तरह से वो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, किस तरह से वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं। दुनिया भर में अपने इंडियन टॉयज़ को जिस तरह से भेजने की बात करते हैं, पहुंचाने की बात करते हैं, ये बताता है कि वो 11th टाइम प्रेसिडेंट की हैं। Congratulations to all the team members, congratulations to all the governing body। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से जोरदार तालियां। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए, थोड़ा जोश भी बना रहता है और कहते हैं तालियां बजाने से सभी बीमारियां भी दूर होती हैं। आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं तालियां बजाती रहिए, खुशियां बनाते रहिए। फ्लिपकार्ट टीम आ चुकी है हम सबके बीच में, विपिन निझामन जी भी आ चुके हैं, कुछ और टीम मेंबर्स आने वाले हैं और करेंगे शुरुआत, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को हर घर में पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी को जान सकते हैं, उनकी ई मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग करने का तरीका, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट और फ्लिपकार्ट के बीच का जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अभी से ही सोच लीजिए कि फ्लिपकार्ट से आपको क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस की, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। In a while, in a very short while, we are going to start this lovely, wonderful, amazing masterclass by Flipkart. Thank you. Well, ladies and gentlemen, with the permission of Mr. Vipin, I request our Flipkart team, Mr. Gautam, Mr. Abhishek, very warm welcome, Shubhankar, very warm welcome, Vivek ji, very, very warm welcome, and I would like to invite on the stage Mr. Rohit Avasthi. Please come up on the stage. I request everybody put your hands together. He is by Head Toys and Stationery. And second name, Mr. Rakshit Kutyala, Category Head. I request you please come up on the stage and very warm welcome. Ladies and gentlemen, it's going to be a discussion on Flipkart.com marketing strategy and e-commerce market benchmark and growth levers. और इसके अलावा भी 1-to-1 question answer round it will take place after the discussion. एक PPT हम present करेंगे on the screen. PPT presentation के साथ वो आप सबको अपनी strategy बताने जा रहे हैं और हमारे बीच में आ चुके हैं प्रेसिडेंट साहब अजय अग्रवाल जी। मैं फिर से उनका स्वागत करती हूँ। He is the continuous 11 times president. Many congratulations, sir. Ajay sir, very warm welcome. You are an inspiration for many and inspiration for
I can say all the Indians. So start करते हैं with the discussion with the e-commerce platform Flipkart. We have Mr. Rohit Avasti and Mr. Rakshit Kutiala. You may start, please proceed. Thank you so much. I request everybody put your hands together. Hello. Hi everyone. Thank you first of all to the association for having us here. It's a great pleasure for Toys team of Flipkart to be here. We'll start with a very brief overview of where the market is currently in India. उसके बाद हम बात करेंगे Flipkart कहाँ पे आता है इस पूरे इकोसिस्टम में, हम कहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं, and where do we need help from the amazing community that we have here. Okay. So talking about the overall market right now, Indian market has been growing at about 10 से 13% year on year for the last 10 years now. 20,000 crore से 33,000 crores is where we see it going to by 2030 in the next 4 years. There are a few levers which are impacting this change right now. सबसे बड़ी जो movement अभी हमें दिख रही है is premiumization. People are moving towards more and more high value products now. लोगों ने अपना बजट खोल दिया है थोड़ा और थोड़े महंगे खिलौनों के लिए. That is the first and foremost thing, premiumization. Second is the prime demographic. जो इंडिया का अभी demographic dividend है, the 30s, 20s and 40s में जो लोग हैं अभी, वो सब हमारे consumers हैं, and these are the people who are earning a lot now, who have that spending capability, which is also boosting the entire ecosystem a lot. The third part is value shift. There's been a change in how people think about toys. Entertainment के लिए अब सिर्फ खिलौने नहीं लेते हैं लोग. It's also linked with the educational, with the learning perspective कि इस खिलौने के साथ play time के साथ हम कुछ सीखें कैसे, TV से ध्यान हट के खेलें कैसे, वहाँ कुछ कैसे सीखें. That is also a big change that we're seeing coming up. Then of course the regulatory boost that has come up. जो इंडिया का import dependence and export का जो substitution किया है हमने, Indian government has a big role to play in that. इतनी policies आई हैं, and of course the association as well. आप लोगों के support से ही ये पूरा economy बढ़ रहा है. There is also a new demand of global brands that's coming up. So Lego, Hasbro, Mattel, all of these are coming up in a big way. So branded names, international IPs are also coming up in a big way in India now. Talking about the different categories from where we see the market as. The first and the biggest one is learning and educational toys. Again, STEM kits, all your learning based toys. This is the biggest market, and this is also the fastest growing segment of the market. The next one is plush toys. This has always been a staple of the industry. It's steadily growing, has about a 20-25% share in the market. The third part is all your electronic and battery. This is coming up in a big way. The growth numbers don't reflect the reality of what is happening on the ground. आपको दिख रहा होगा exhibition में कितने सारे ride-ons हैं अपने पास, battery, non-battery, drones कितने सारे आ रहे हैं. There's also a new wave of all your AI toys coming in the next coming years is what we also foresee. इसके अलावा RC toys, all your robotic toys, interactive games, all of that sits in this segment. This is also growing a lot in the last 2-3 years. Then we have your action figures and characters, all your licensed products, doll houses, dolls, play gyms, all of that comes in this segment. The last one is outdoor and sports toys. About 10% seasonal demand रहता है इनका, tent houses वगैरह का. Also just a brief overview of how the import and export scenario has changed over the last 10 years or so. We were a chronic importer in year 2012-2013, from where we have done a sea of change. In the current year, हमारा import from China has dropped by about 80%. And on the other hand, export from India has grown by about 4x in the same period. This is also being held up by the association members, the government of India. BIS certification, so I think there was a big role for the association to play in getting that. Second part, जो government support कर रही है in the import duty increase for manufacturers outside India, and then of course the PLI schemes that are coming in. We'll move now to where Flipkart comes in this journey. How can we help you guys grow your business? How can you help us reach a more broader set of customers? जो भारत है हमारा, उसको कैसे पहुंचेंगे? I'll invite Rohit up to the stage to take this up further. Hello, hi, good afternoon everyone. So Rakshit covered that
you know where the market is right now, कि क्या चल रहा है market में, क्या बिक रहा है, what is where the growth is coming from, what are the new segments in the market which are coming, and of course like the last slide I would like to go back to last slide once more because lot of manufacturers are there. आप लोगों की वजह से you see like the kind of shift which has happened in market. हम 2013-14 में 40 मिलियन का $40 million का एक्सपोर्ट करते थे, and we used to import $304 million worth of toys. And look at the shift which has happened from in the last 10 years. We have moved from 40 to 150. Like we have किसी भी business के लिए net trade positive होना is such a big thing, right? When the industry is like toys industry, जहाँ पे we have so much dependence on China, or we used to have so much dependence on China, which has also significantly come down. कि हमारा import में जो China का share होता था वो 94% होता था, अभी that share has gone down to only 62%. अभी भी like there is a lot of dependency on China, but I think with the support of all of you here, all the innovation that's coming in the market, I think we will be able to bring down this share of export, you know, even lower. Now I want to talk, so how we will structure this discussion is कि 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक पहले I would want to tell you guys कि फ्लिपकार्ट पे कौन कंज्यूमर है, लोग कौन है, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि who is my consumer, who is someone, who is that potential customer who is coming on platform and you know searching for your products, so that कि आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर पाओ, आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि मार्केट में ढूंढ कौन रहा है ये वाली चीज़ें. When you will have that clarity, then you will be able to make better products. You will be able to understand कि मेरा डिमांड किस चीज़ का है मार्केट. तो एक स्केल बताता हूँ मैं आपको. So we have given some reference here कि इंडिया में अराउंड 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं. 700 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है, उसमें से 550 मिलियन लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. एंड 550 मिलियन में से 450 मिलियन पीपल आर यू नो रजिस्टर्ड ऑन फ्लिपकार्ट. दे हैव एटलीस्ट केम एंड यू नो ब्राउज्ड वंस इन लाइफ टाइम. 450 मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर. एंड उसमें से 250 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो 250 मिलियन इज़ अराउंड 25 करोड़. लाइक थिंक कि अगर 150 करोड़ इस देश की आबादी है, उसमें से अगर 25 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांजिट करें तो द काइंड ऑफ स्केल इट हैज़. एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन है? यू वांट टू रीच आउट टू पेरेंट्स, एंड आउट ऑफ दैट 250 मिलियन कस्टमर, 120 मिलियन वर पेरेंट कस्टमर्स. So you have access to 120 million parent customers of this country across geographies, across tiering, across affluence. That is the advantage to have. यहाँ पे we have tried to show कि अभी कौन, जैसे एज ग्रुप देखोगे आप, out of this customer base 84% कस्टमर, अगर आप ये देखोगे ब्लू वाला 59% कस्टमर्स हैं जो 25 से 35 साल की उम्र के बीच में, एंड 15 to 24 ईयर्स के बीच के 24 कस्टमर. तो ऑलमोस्ट सारा मार्केट इज सिटिंग विद यंग पीपल. 15 से 35 साल की उम्र के लोग हैं जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, एज इन कि अभी यंग मिलेनियल्स जो 90s बॉर्न लोग हैं, दे आर बिकमिंग पेरेंट्स एंड दे आर ड्राइविंग कि क्या चीज़ खरीदनी है, एंड दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस, दे वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर देयर किड्स. So this is one like important learning from this data कि majority of the decision is being driven by 15 to 35 years old. Zone देखोगे आप, अब for example आप में से कई लोग किसी का प्लांट नॉर्थ में होगा, कोई साउथ में होगा, you will be and आपके जो रिटेलर्स भी होंगे, they will be focused in that particular region. Now if you will look at this data, 31% of people are in north, 28% लोग ईस्ट में, 25% लोग ईस्ट में, एंड 28% people are from south. So you have like width of people, चारों जोन के कस्टमर्स हैं आपके पास, you have reached to those customers. अभी फ्लिपकार्ट थोड़ा मेल डोमिनेंट है. ओवरऑल फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम देखोगे अराउंड 80% आर मेल कस्टमर एंड 20% आर फीमेल कस्टमर. एंड दिस इज सिटी टीयर वाइज देखोगे अराउंड 55% ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम टीयर 3+ सिटीज. मैं एक लेवल अंदर जाके आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट में तो सब कुछ बिक रहा है. मतलब फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिक रहा है, आप फ़ोन्स खरीदते होगे फ्लिपकार्ट से, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते होगे. फ्लिपकार्ट पे टॉयज़ कौन खरीद रहा है आज? और एक डेटा बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में से 4 लोग साल में एटलीस्ट 3 बार खिलौने खरीदते हैं फ्लिपकार्ट में. सम टॉय परचेज हैपन्स, लाइक 4 out of 10 कस्टमर्स दे बाय टॉयज एटलीस्ट 3 times a year. अब सेम अगर टीयर स्प्लिट देखोगे यहाँ पे टीयर 3+ में देर 55 से 60% लोग टीयर 3+ सिटीज़ में बैठे हुए हैं. सिमिलर जोनल स्प्लिट भी है, बट ये इंटरेस्टिंग डेटा है. अब आप जेंडर देखोगे
60% of the toys customer are behavioral female customer. What does it mean? कि जो बाइंग हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो फीमेल्स कर रही हैं घर की. Like women are the customer, so you have to design your product in a way that it should be appealing to mother more than father, because mother is the one who is driving the purchase there. मतलब 60% अगर आप ओवरऑल आपने देखा 80-20 था मेल फीमेल रेशियो, लेकिन यहाँ पे उल्टा है. यहाँ 60% फीमेल टॉयज बायर एंड 40% मेल फीमेल टॉयज बायर. एंड वन डेटा आई वांट टू टेल कि इंडिया में जितनी भी ऑनलाइन टॉयज परचेज होती हैं उसमें से अराउंड 35-40% टॉयज परचेज हैपन ऑन फ्लिपकार्ट. नाउ आई ये तो फ्लिपकार्ट के बारे में था. मतलब यू वुड बी लाइक यहाँ ठीक है, आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो कि आपका कस्टमर कौन है, बट व्हाट इज इन मेरे को कैसे समझ में आया कि मेरे को कौन से सेगमेंट में काम करना है. तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट का. यूएस इज़ लाइक वेरी मच्योर्ड मार्केट एंड वी फॉलो लॉट ऑफ ट्रेंड्स कमिंग फ्रॉम यूएस. मार्केट भी उस डायरेक्शन में मूव होता है. एंड जस्ट टू एक स्केल का आइडिया देने के लिए आपको बताता हूँ कि इंडियन टॉय इंडस्ट्री विल बी $3.5 बिलियन. यूएस में लेगो ही $5 बिलियन का धंधा करता है. तो यू लुक एट द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट जो अभी बचा हुआ है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री $3 बिलियन की है. तो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट growth which is supposed to happen. Lot of things are coming, lot of international brands are coming, so there is going to be a lot of momentum in the market. अब इससे आपको इस डेटा से क्या बेसिकली 5 टॉयज़ के कैटेगरीज में वी हैव डिवाइडेड दिस कि आउटडोर टॉय, ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन, कलेक्टिबल, इन्फेंट प्री स्कूल्स एंड डॉल्स एंड फिगर्स. यहाँ देखोगे तो यूएस में केवल 20% आउटडोर टॉयज़ का मार्केट है. इंडिया में 28% सबसे बड़ा मार्केट ही है. तो मतलब हमने आउटडोर टॉयज़ में अच्छा काम कर लिया है. इंडिया मार्केट जैसे आउटडोर टॉय का मतलब हुआ किड्स स्कूटर, स्टैंड्स, राइड ऑन, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें ऑलरेडी लॉट ऑफ डिमांड हैज ऑलरेडी कम इन द मार्केट. नाउ दैट 4 blocks आर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू गेट बिगर इन द फ्यूचर. क्योंकि ये वाले सेगमेंट ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन यूएस में 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंडिया में अभी 7% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है. कलेक्टिबल्स देखोगे, जैसे कलेक्टिबल्स इज अ बिग मार्केट एंड लाइक इन इंडिया नो वन हैज़ डन अ डिसेंट जॉब ऑन कलेक्टिबल्स यet. जैसे हमारा क्रिकेट का कितना बड़ा कल्चर है, बट यू वुडंट हैव सीन कि किसी ने लाइसेंस मिनिएचर फिगर्स ऑफ कि विराट कोहली की कोई लाइसेंस फिगर बना रहा है. थिंक अबाउट इट, इफ समवन इज एबल टू क्रैक लाइसेंस फिगर्स ऑफ क्रिकेटर्स, ऑल दीज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अगर कोई बनाता है तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइंग हियर. नो वन हैज टैप्ड दिस अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज समथिंग वेयर यू गाइस कैन वर्क ऑन. इन्फेंट एंड प्री स्कूल टॉयज में यहाँ लॉट ऑफ क्वालिटी फोकस इज कमिंग, लॉट ऑफ वुडन टॉयज आर कमिंग इन द मार्केट. So this is one segment जो infant and preschool का है. This is also very under indexed in India. And of course like dolls and figures, अभी जैसे majority of the market is driven by कि बारबी खरीद रहे हैं लोग, लेकिन Indian dolls वाला market अभी उतना established नहीं हुआ है. So these are the potential areas where जहाँ we can work on and definitely the potential is sitting in the market. अब आपको ये आइडिया देने के लिए कि मार्केट, इंडियन मार्केट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी, तो ओवरऑल बिजनेस शेयर बताता हूँ. वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स की बैटरी और नॉन बैटरी. अब बैटरी का मार्केट अराउंड 45% का है एंड नॉन बैटरी का मार्केट इज अराउंड 55%. अब मैन्युफैक्चरर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट बताता हूँ आपको कि जो भी बैटरी टॉयज़ हैं जिसमें राइड ऑन्स हो गए, आपके मेजॉरिटी राइड ऑन्स हो गए, इलेक्ट्रिक राइड ऑन्स वगैरह, वहाँ पे हमने ऑलरेडी अराउंड 70-75% मैन्युफैक्चर शेयर अचीव कर लिया है. लाइक 10 प्रोडक्ट बिकते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो ऑलरेडी वी हैव मैन्युफैक्चरर्स 7-7 प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स. तो दैट स्केल वी हैव अचीव एंड ऑफ कोर्स लाइक ये तो स्टेब्लिश्ड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे तो आप काम कर ही सकते हो. बट जो नॉन बैटरी टॉयज़ हैं, नॉन बैटरी टॉयज़ में अभी उतना मैन्युफैक्चरर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है कि फॉर एग्जांपल लर्निंग टॉयज़ हो गए या स्टफ टॉयज़ हो गए या फिर बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स, दीज काइंड ऑफ टॉयज़, यहाँ पे अभी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है. So that is something where we can work on. अब एक उसी का एक्सटेंशन में आई टेल यू वन दिस डेटा, लाइक आई हैव ट्राइड कि वी गो 1 level डीप एंड टेल यू कि कौन सी कैटेगरीज पिक करनी चाहिए आपको, क्योंकि एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ, मतलब व्हाई फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म इज हियर टू गेट मैन्युफैक्चरर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. कि आर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर गिविंग इट टू सम डिस्ट्रीब्यूटर एंड दे आर कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. Why don't we go deep into this value chain and why don't we provide the best prices to the customer, because आपसे best price कोई नहीं दे पाएगा. So that is the reason Flipkart is here to push for manufacturers to come on the platform.
अब जैसे रिमोट कंट्रोल टॉय बताता हूँ मैं आपको. रिमोट कंट्रोल टॉय इन इंडिया, इंडियन मार्केट इज लाइक गोइंग so heavy. We are seeing so many search terms, and अभी whatever limited selection also we have, इतने manufacturers नहीं है हमारे पास, उसके बाद भी this business is growing by almost 100% year on year. You think about it, like what is the potential, and काफ़ी China dependency अभी already RCT करते हैं. So if some Indian manufacturer is able to crack remote control toy का market, like that growth is, अभी जो share देखोगे आप manufacturers में RCT में is only 30-40%. जबकि verticals like electric ride-on, toy tricycle, यहाँ पे lot of work has already happened. 70-75% share already comes from manufacturing. So अगर one key takeaway if I want to take this from slide is कि you should work on learning toy, you should work on musical toys, you should work on stuffed toys, role play toys. This is where we don't have lot of manufacturers. If you are able to come on platform, provide value to the customer, good quality product, like no one be able to stop your growth. So this is where, like, this is the key takeaway which I want all of you to take and figure out, you know, if I want to invest in one of these verticals, so that, you know, we are able to provide the best value to the customer. So to help you further कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, this is the real Flipkart data कि we have tried कि जो verticals हैं, एक verticals उठा के we would want to show you कि लोग what people are searching, like 450 million consumers are there, users are there on platform. What are they searching? And when like इतने सारे लोगों का जब data होता है ना, तो you get to know like what is the trend in market, what people are buying. तो RCT देखोगे ड्रिफ्ट कार का 121,000 मतलब 1,21,000 मंथली सर्च वॉल्यूम है सिर्फ इस सर्च टर्म का, RC ड्रिफ्ट कार का. हेलीकॉप्टर का बहुत डिमांड है. तो आई जस्ट क्विकली, लाइक आई विल नॉट गो थ्रू पूरा लिस्ट, बट आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू कि कौन कौन से सर्च टर्म है. जैसे रिमोट कंट्रोल टॉय में JCB टॉय पीपल आर लुकिंग फॉर. So if you are a RCT manufacturer, you go and you try to invest in JCB, क्योंकि वॉल्यूम देखो यहाँ पे 64,000 लोग मंथ लेवल पे सर्च करते हैं प्लेटफॉर्म पे आके. व्हीकल पुल अलॉन्ग में देखोगे लॉट ऑफ डिमांड फॉर, यू नो, इंडिया में कार को लेके एक अलग एफिनिटी है. मतलब RCT बिकता है बहुत. अगर डाई कास्ट वाले जो खिलौने होते हैं उसमें भी बहुत कार्स का मार्केट है. तो अगर आप व्हीकल पुल अलॉन्ग के साथ देखोगे BMW कार टॉय, थार, बुलेट बाइक, ट्रैक्टर टॉय, ट्रक टॉय, these are the terms which people are looking for. इसमें से कुछ भी आप प्रोडक्ट क्रैक करोगे, you will get visibility, you will automatically come up. Like you don't even need to put lot of effort. Make good quality product from these things. Learning toy देखोगे, blocks for kids, cactus toy, kids laptop. These are the top, and this is the potential opportunity basis like whatever market intelligence. जैसे RCT में ऑनलाइन में 500 से 700 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बैठी है. ओवरऑल मार्केट में 1,500-2,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बैठी है. व्हीकल पुल अलॉन्ग में ऑनलाइन 200 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है. लर्निंग टॉय में भी 300-350 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है. लर्निंग टॉय तो इज अभी इतने सारे D2C प्लेयर्स आ गए हैं. आपने सुना होगा स्किलमेटिक्स, इमेजिमेक, दीज ऑल ब्रांड्स, दे आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड देयर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग टॉय. राइड ऑन में जैसे कार फॉर किड्स, बाइक फॉर किड्स, दीज आर वेरी हाई सर्च वॉल्यूम टर्म्स. So I'll not go through whole list, but I think you guys would be getting the sense of कि what kind of things people are searching for. अब because if we have come here, we would want to tell you कि ऐसा नहीं है कि we are pitching this for you the first time. हमारा almost 40-50% of our GMV comes from manufacturers, and here are the few examples of some manufacturers who we onboarded in last 3-4 years, and look at their scale. सबसे पहले लिटिल राइड्स ही है, विपिन जी बैठे हुए हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिक राइड ऑन्स एंड स्ट्रोलर्स का बिजनेस है. लाइक दे लॉन्च्ड इन 2024 लिटिल राइड. इन 2026 द बिजनेस हैज ग्रोन टू 10x. लाइक 10x ग्रोथ किसी भी बिजनेस में है, इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू. देन हमारे पास पांडा है. पांडा का स्केल भी ऑलमोस्ट 7x हो गया 3 सालों में. अदिति टॉयज़ है, चनक है, जो जिसका स्केल भी ऑलमोस्ट 5-7x हो गया है. Then there is a manufacturer called Bitso also, who are also there. उनका भी स्केल अगर देखोगे 8-9x हो गया last 3 years में. So like these are the testaments of कि this, if you will come there, you will get successful. Like you have opportunity to, you know, scale your business to 7x, 10x in 3-4-5 years. One more interesting data I would want to show you guys is कि I'm not sure आपको नीचे दिख रहा होगा. तो this orange one is the retailers and aggregators, and the blue one is manufacturers.
तो बेसिकली कौन कितना धंधा कर रहा है. अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे, there are 44 manufacturers who are doing more than 10 CR of business every year. For 54 manufacturers who are doing business of 5 to 10 CR per month, per year. So the idea is कि if manufacturers enter to the market, there is a huge opportunity lying in front of them. Last I'll come कि मतलब what will you guys get on after selling on Flipkart? One is कि definitely like there is a reach 50 you have a reach of 450 million plus customer, 19,000 pin codes हैं, lot of delivery hubs. One thing that Flipkart has done recently is there is zero commission on 0 to 1,000 products now. So like आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, you will automatically get the best price, कोई commission apply नहीं होगा. And आप as a manufacturer you would want your cash flow to be maintained, very fast 7 days payment cycle. For some gold tier there is a 3-day payment cycle. So your cash flow will also keep on getting maintained. And this is very important because BBD आने वाला है. BBD में to, you know, if you want to onboard on Flipkart, do it because that BBD is coming in September, October, and there is a huge opportunity of scale lying around. Now coming to कि हम क्या solve कर रहे हैं, like what are we solving? That of course we are giving you scale, we are giving you reach to those consumers. लेकिन इसके अलावा what is that innovation that we are driving as a platform? तो there is a like you have a इतनी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि मान लो आपको ये टारगेट करना है, जैसे आपने ये डेटा देखा कि हाँ फीमेल कस्टमर्स हैं एंड यू आर प्लानिंग टू लॉन्च अ फॉर एग्जांपल ब्रांडेड हाई एसपी प्रोडक्ट. यू हैव कैपेबिलिटी टू रीच आउट टू यू नो एफ्लुएंट फीमेल रिजाइडिंग इन मेट्रोज बिकॉज दैट्स योर टारगेट ऑडियंस. आप क्या पता सबके लिए लॉन्च नहीं करना चाहते हो, आपका एक टारगेट ऑडियंस है. यू कैन डू दोज टारगेटिंग कैपेबिलिटी. नाउ देर आर ब्रांड स्टोर्स, लॉट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग हैपन्स ऑन फ्लिपकार्ट कि दो तरीके से लोग सर्च करते हैं ब्रांड पर. एक किसी ने सर्च किया टॉयज़ फॉर किड्स, अगर आपका रिजल्ट ऊपर आ गया एल्गोरिथम ने डिसाइड किया. नाउ वंस यू बिकम बिग इनफ पीपल स्टार्ट कमिंग ब्रांड बन गया मार्केट. सो द गोल इज टू रीच टू दैट स्टेज. तो उसके लिए लॉट ऑफ ब्रांड स्टोर एंड रिच कैटलॉग की कैपेबिलिटीज़ हैं. यू कैन डिज़ाइन योर कैटलॉग, लॉट ऑफ AI टूल्स इन फ्लिपकार्ट यू कैन हेल्प यू डिज़ाइन कैटलॉग so that और जितना अच्छा कैटलॉग होता है उतना कन्वर्जन ज़्यादा होता है. So this is something that we can solve. There is a new alternate way of commerce जो चाइना में बहुत अच्छा चल रहा है, live stream. Like चाइना में lot of business e-commerce comes from live commerce. We are also trying to scale live commerce on Flipkart. So you have if you want to do you know कि एक बंदा कोई होता है and they will tell customers about their product and 1-2 घंटे का डील होता है and then there you can put your product and it will get lot of visibility. This is also one way where we are reaching to the customer. Now the fourth one is very important. We have a huge influencer ecosystem. मतलब we work every month with at least 5 to reach to lot of consumers who will not be maybe aware about your product. So lot of influencers content get created. We work with lot of brands. अगर आप लोग Instagram पे होगे तो we did a big event with Lego recently, like 2-3 महीने पहले in Mumbai, and we keep on doing these influencer activations with lot of our marketplaces brand also. So इसमें idea is कि that we have reached to those influencers which can catapult your product, जो आपके product की reach को जगह जगह पहुंचा सकता है. और ऐसा नहीं कि मेट्रो के कस्टमर हैं, हमारे पास केरल के भी इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के इन्फ्लुएंसर हैं. So your product can reach to the people very very fast in a very effective manner. So this is a big advantage that you get when you come on board on Flipkart. And now this is the last slide कि हम यहाँ पे हैं, but what do we want from you guys also? What do we want from Toys Association also? Like definitely in the last 3-4 years, Toys Association has been very helpful in helping us in getting reach to more manufacturers. But what we want to drive, one is कि we want to co-develop innovation. Whatever innovative products you are making, what are the new trends you are making, that we want you to launch on Flipkart. अभी क्या होता है कि सारे trends market में like majority of the trends are driven by China. When like we are such a huge population, हमारे India one of the most populous country in the world, why can't we drive trends in the market? So what we want you guys to do is if you are launching an innovative product, some new product,
We want you to launch that product on Flipkart. Work with us. Leverage our influencer ecosystem. Do that so that we can also drive trends. जैसे चाइना में लास्ट ईयर ट्रेंड आया लबूबू का, इंडिया ऑल्सो डिड वेरी वेल इन लबूबू. देन कुछ नया नया ट्रेंड आता रहता है, तो we want to be that platform who drive those trends in India. So that is the one help that we need from you guys. And wherever you guys think there is a gap in the market which we are not fulfilling, please come to us with insights. We have account managers, we have lot of teams who reach out to sellers, and we will give a QR code also in the end if you want to reach out to us. But we want you guys to come to us and tell us, you know, where we are lacking, so that, you know, you and us both can bridge the gap in the market. So yeah, this is, if you want to part of the ecosystem, you have any questions, you can scan this QR code. And now we are open for any questions, any doubts you have, anything you want to understand. Thank you. मैं चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार तालियाँ फ्लिपकार्ट टीम के लिए, एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. और अब मैं गुजारिश करती हूँ मिस्टर अजय अग्रवाल जी से, हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्लीज़ कम अप ऑन द डाइस. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी. आई रिक्वेस्ट यू फॉर फ्यू वर्ड्स. Good evening everyone. Thank you for attending this beautiful seminar managed by Flipkart. हमारे बीच में मिस्टर रोहित अवस्थी फ्लिपकार्ट से और मिस्टर रक्षित फ्लिपकार्ट से एसोसिएशन बहुत बहुत इनका थैंक यू करती है. और आज का जो इवेंट 17th टॉय बिज आपके सामने है, फ्लिपकार्ट हमारा टाइटल स्पॉन्सर है. फ्लिपकार्ट ने हमारे को सपोर्ट किया है इस एग्जीबिशन में काफ़ी हद तक. काफ़ी अच्छे से इंसाइट इन्होंने दे दिया है मिस्टर अवस्थी ने ऑलरेडी. तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड मैं करना चाहूँगा कि जब हमारा टॉय एसोसिएशन का फ्लिपकार्ट से टाई अप हुआ है, तो कुछ भी ऑन बोर्डिंग के लिए मैन्युफैक्चरर को कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, करोड़ों इनके पास बायर हैं, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, पेमेंट्स हैं इनके पास. अपनी कमिटमेंट से पहले पेमेंट्स इनकी रिलीज़ होती हैं. तो मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, क्वांटिटी, पेमेंट, ऑर्डर, वो सारा इनके पास है. आज देश में अवस्थी जी मैं बताना चाहूँगा 20,000 से ज़्यादा टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो 70-80% माइक्रो के अंदर है. उनके पास वो सेटअप नहीं है मार्केटिंग का, डिजिटलाइजेशन नहीं है जो आपके पास है. तो उनको चाहिए एक प्लेटफॉर्म. वो मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं, माल बेच नहीं सकते क्योंकि उनके पास सेटअप बहुत बड़ा नहीं है. तो हम उनको सबको आपके साथ जोड़ना चाहेंगे. हमारे इस एसोसिएशन की तरफ से कुछ भी मदद आपको कभी भी चाहिए, ऑन बोर्डिंग, सेमिनार, फिजिकल, ऑनलाइन, वर्चुअल, सब तरह से हमारा एश्योरेंस आपके साथ है. और हम चाहते हैं हमारा मैन्युफैक्चरर इसमें आपका साथी बन के, आपका पार्टनर बन के अपने आप को ग्रो करे, कंट्री को ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. वो सारी चीज़ें एसोसिएशन चाहती है. आज हमारा सेकंड डे है, 2 दिन और बाकी हैं. आप अपनी टीम को और भेजो यहाँ पे, और ऑनबोर्डिंग के लिए बातें करें, मैन्युफैक्चरर से इंटरेक्शन करें. कहीं भी आपको असुविधा हो किसी भी चीज़ में तो हमारी टीम रेडी है. और अब हम एसोसिएशन में एक कमेटी बना रहे हैं जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स को कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करेगी. तो उस तरह से कोई भी तरह का प्रपोजल रहेगा तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे. मैं विपिन निझावन जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अवस्थी जी का फूल का गुलदस्ता देके स्वागत करें. विपिन निझावन जी एंड रोहित अवस्थी जी, प्लीज़. रोहित अवस्थी जी देखिए गुलदस्ता, जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें. मैं आशीष अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रक्षित जी का फूल का गुलदस्ता देके स्वागत करें. जोरदार तालियां बजाएं. हमारे बीच में एक बहुत ऐसे परिचित लेडी हैं
मिस तन्नू इलाहाबादी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार स्टेज पे आए, और विपिन जी और आशीष जी के दोनों बच्चे यहाँ हैं, वो दोनों भी आए, एक फूल का गुलदस्ता देकर इनका स्वागत करें। मिस्टर तन्नू प्लीज जोरदार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करें। शी वुमेन एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुंबई की किड्स इंडिया को चलाती हैं। तो ये दोनों बच्चे यंग जनरेशन है हमारी, और एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में सब काम करते हैं। जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद तन्नू जी, धन्यवाद बच्चों, आपने मैडम को ऑनर किया। ज़्यादा समय नहीं ले रहा, क्वेश्चन आंसर का टाइम है, लेकिन एसोसिएशन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंटरेक्शन और ब्रिज को भरने का हम काम करते हैं। फ्लिपकार्ट टीम हमारे साथ है, बहुत सपोर्ट है इन लोगों का। आप कोई भी मैन्युफैक्चरर को कहीं भी ऑन बोर्डिंग में किसी भी चीज़ में कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारे से संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर अजय अग्रवाल जी। So ladies and gentlemen, now it's time for the question answer round. You may raise your hands. You may raise your hand if you want to ask any question, any query do you have? Please, mic dije. Hello, this is the question for Mr. Rakshit and Mr. Rohit. I want to know about the stuffed toy figures. Actually, there were some slides which were skipped. So, how is the stuffed toy business growing up in India? So stuffed toy has been like, you know, bread and butter of toys industry. Like it's not something which is new. It is not something which has suddenly come up. Of course, like there is a seasonality in demand कि February में जब Valentine's Day होता है या कोई gifting occasion होता है, तो there is sudden surge in demand. But it's a steady vertical which is growing like around 25-30%, and lot of demand is shifting. One thing which has changed after quick commerce is कि people are looking for premium quality toys, and lot of shift has started to happen to those premium plush toys which is in the market. But as a business, like steady stuffed toy is something which is constantly growing, and you know contributes healthily to overall business. So yeah, like from opportunity wise, definitely like stuffed toy is something that I would work on. Okay, thank you, sir. Anyone else? Ji. As a platform, we want to give best experience to the consumer, right? If अगर आप option नहीं दोगे consumer को return करने का, then consumer will be very hesitant to buy because on e-commerce you are not physically seeing the product, and unless you are not physically seeing the product, you wouldn't know कि actual में है कैसा है. And अगर आप option नहीं दोगे return को, तो it will lead to लोग buy नहीं करेंगे, they will be hesitant to buy. Now to answer your question कि returns high क्यों है, कम क्यों है? जैसे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सेम वर्टिकल, किसी प्रोडक्ट का रिटर्न रेट 1% होता है, किसी प्रोडक्ट का रेट 15% होता है. क्यों होता है? बिकॉज प्रोडक्ट का टाइप तो सेम है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड द कम्युनिकेशन दैट यू आर डूइंग इन कैटलॉग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कस्टमर को बोल रहे हो कि यू आर सेलिंग समथिंग ऑफ 600 रुपीज़, बट सच में वो है नहीं है 600 रुपये का वर्थ मार्केट में, तो ऑफकोर्स व्हेन इट विल रीच टू द कंज्यूमर विल फील कि यार दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्थ 600 रुपीज़. तो कोर आइडिया इज कि अगर आपको रिटर्न कम करने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यू हैव टू इंश्योर दैट योर प्रोडक्ट इज प्राइस्ड एज पर द क्वालिटी. आप मार्केट में देखो कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस का बिक रहा है. व्हेन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन विल बी मेट, योर रिटर्न्स विल ऑटोमेटिकली गो डाउन. सो दैट इज द होल आइडिया दैट
You make good quality product, you communicate it better, and you price it right. And you will see, like, you will automatically see that returns will automatically start going down. Sometimes the sellers also get damaged products, basically returns. So in that case, how Flipkart supports that, तो फ्लिपकार्ट में एक SPF करके होता है, सेलर प्रोटेक्शन फंड. सो वेन एवर यू गेट डैमेज प्रोडक्ट, कई बार ऐसा होता है कुछ कंज्यूमर्स अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी ने ख़राब प्रोडक्ट किया वापस, या कोई दूसरा प्रोडक्ट वापस कर दिया. देयर इज़ अ मैकेनिज्म, यू कैन अपलोड दैट इमेज, एक प्रोसेस बना हुआ है, एक टूल बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, एंड यू विल गेट रिफंड फॉर योर प्रोडक्ट. So that mechanism is there. If anyone tries to abuse the system, you are protected through that seller SPF. Thank you. Please give the mic. Hello, myself Danish. I am from Ahmedabad. My question is, what is the tolerance policy or any framework, created by Flipkart against the misuse of BIS by the aggregators and retailers online, and how do you protect the manufacturer's right against such misuse of the BIS? So it is sometimes noticed that they are just uploading some fake numbers, and it is being the sell is allowed. So how can you curb this so that more manufacturers are encouraged to come online? See, like BIS as a policy is mandated now, right? कि गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि आपको खिलौने बेचने के लिए BIS चाहिए. Whenever any such case comes कि अगर हमको पता चलता है कि गलत सर्टिफिकेट है या there is a problem, then if someone highlights it to us, then those products also we take actioning, products get delisted, that actioning. But the expectation from the market is कि अगर कुछ policy है, we expect the sellers and manufacturers to adhere to it. कि and lot of times ये checks भी होते हैं कि BIS है कि नहीं है. So the whole idea is कि हमारा expectation market से कि some policy exists, then people should follow it. Also add, there is a full team sitting in Flipkart who does the audit of these things. BIS किसी का है, BIS expire हो गया है, we get a daily mailer on इतने products का BIS expire हो गया, you have to get it renewed अगर ये product genuine है तो. So there is a full framework in place, there is a full team in place who works on this exact problem, because BIS is government mandated now. Also, there is a discrepancy in the rates of GST applicable on electronic toys and non-electronic toys, and also for the composition scheme sellers. So how does Flipkart ensures that the correct GST rates are applicable? As we have noticed in certain areas of Gujarat that they are just opening the accounts in the name of composition schemes and availing the benefits of 1% GST. In actual, they are buying some 5% goods or 12% goods or 18% goods. Now only 12 and 18 are there. But this is a very big problem and challenge to the big manufacturers who are willing to come forward but are facing such issues. And this is not a genuine business. They are just finding loopholes in the taxation system and bypassing the Flipkart's module so that they can charge less GST and charge under costing than the manufacturer. See, this is only possible in the cases जहाँ पे किसी ने product एक stuffed toy लिया है, list उसको कर दिया किसी और vertical में, where it's a different GST. That is where Flipkart also can't help a lot, because वहाँ पे expectation ही है, this is rule of the land, मतलब ये तो लोगों को follow करना चाहिए. And what I will add to this, तो मतलब जैसे मान लो किसी ने सिस्टम को गेम करने की कोशिश की और गलत जगह लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट. हाउ फ्लिपकार्ट टेक्स केयर ऑफ इट, दैट फ्लिपकार्ट एल्गोरिदम्स आर डिजाइन इन अ वे कि इफ समवन इज सर्चिंग फॉर स्टफ टॉय एंड यू हैव एडेड सम अदर प्रोडक्ट इन स्टफ टॉय, तो वहाँ जो लिस्ट होता है वो प्रोडक्ट जिस स्टोर में जाके लिस्ट होता है वो आपकी ना कभी डिस्कवरी नहीं होगी, वो बिकेगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपने किसी और वर्टिकल में लिस्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आपने स्टफ टॉय को किसी और वर्टिकल में जाके लर्निंग टॉय में कर दिया, जस्ट टू टेक एडवांटेज, लाइक आई एम टेकिंग एन इमेजिनरी सिचुएशन, तो वहाँ पे क्या होगा, समवन विल कम फॉर स्टफ टॉय, वो स्टफ टॉय सर्च करेगा, सिस्टम्स एल्गोरिदम विल लुक एट इन द स्टोर ऑफ स्टफ टॉय, नॉट इन लर्निंग टॉय, तो आपका प्रोडक्ट कभी डिस्कवरी नहीं होगा. So if someone is trying to game system in that way, their discovery will get hampered so bad that they will not get sale. So that is the whole idea of all these stores कि हम discovery sort कर पाएं. So whatever situation you are saying, even though people are trying to game the system, but they will never get sales. The numbers say differently. Thank you. Yes, please.
Thank you firstly, the kind of insight you shared. That was really eye-opening because I'll probably touch base on all three models. One, firstly as a customer, as a parent. Secondly, as a retailer. I'm not into manufacturing, but probably will touch base on few questions there too. As a parent, if I have to really talk, and we saw like mothers, moreover, selecting the products. What we today are concerned is, whatever we touch and understand are good for my kid, we personally pick that up quicker than what we pick up online, right? So we were talking about the influencer market or the videos. We look forward, for those product details moreover, and then buy it, right? That's something majorly is a gap which we see in the online market. Because we can see the product photos, we can see 3+, 8+, but we don't know what exactly it is inside and it's good or bad, right? Coming to the question about China and India comparison, we still feel, yeah, we are improving, but we need to get there quality-wise as well. Because when we buy something online, as someone was pointing about the return rate as well, as we are not aware of the product quality, there are high chances that we return it more often because they are not good for our kids. So having those maybe influencer or video platforms talking about the product quality is major. Coming to the manufacturing side, I think today we are still a lot dependent on the manufacturers from the other countries to build up our parts. While going through the expo, I saw a couple of people talking about the parts or the motors and stuff like that. It would be great if Flipkart can come up with those more options where India can use those parts and, progress further. So I just talked about few of the concerns, but what are your point of view on these? So like definitely quality has become one of the most important aspects, and you rightly talked about how influencer marketing is helping in solve this problem. I'll tell you one thing, if you will go on Flipkart, so apart from social media where we are educating people about the quality, about the user, like how to use that product, Flipkart ke andar bhi there is an integration of videos now. So on the product page, what we are trying to integrate lot of influencer content on the product page itself, and lot of pushes on to show user generated content. So for example, agar aap ja rahe ho and you have to decide whether you want to buy this product or not. Lot of videos, lot of pictures are there which was uploaded by the users of those products. So our whole idea is also to show those kind of products which are good in quality, should have less return rate, and system algorithm bhi aise defined hai ki jin products which will have good ratings, lesser return rates, they will have higher chance of discoverability. So system will automatically start dinging those products which are not good quality or not good rating, and maybe people are returning more. I'll just add one more thing there. Coming to the trust angle which you touched upon, trust अभी पूरी economy is working on the creator side of things. अगर आप किसी influencer को देखते हो actually using that toy, that is where that authenticity comes from. So Flipkart as a whole is also investing a lot with these influencer communities now. If you see toys as a category is also very discovery led. लोगों को टॉय कोई अच्छा लगता है वो impulse में buy कर लेते हैं. So that is also the entry point. So I would also encourage all of the manufacturers to start working with these creators either through Flipkart, we have a platform for that, or you can reach out to them directly as well. It's a really, really powerful channel that is working for us. Hi, Jiten here from Bo Games. I'm the co-founder of this company. I would like to know which category subhead would the board games fall under in your presentation, the numbers which I have to relate to? There's a puzzles and board games vertical separately. Okay, that's the focus. Hi, good evening. So I have a question. Basically, right now, all customers are moving towards quick commerce. So Flipkart also launched Flipkart Minutes. So I just want to know what type of categories and what type of products are you going to enroll in Flipkart Minutes and how to enroll in that? So like it's been already one and a half years since Flipkart Minutes was launched, and like we are scaling up pretty well. And the idea of Minutes is क्योंकि from a storage point of view आपके पास बहुत limited space है. So what's the purpose of having one blue, एक Flipkart का normal national mode and then Flipkart Minutes is कि आप national mode में you want to keep a width of selection because toys is very design heavy category. आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी. Now what happens, whatever is Pareto, whatever is selling most in national
इन ईच वर्टिकल वी आइडेंटिफाई कि कौन से वर्टिकल के कौन से 5 प्रोडक्ट रख के मेरा 30-40% बिजनेस कवर हो सकता है. सो वी शॉर्टलिस्ट प्रोडक्ट ऑन दैट बेसिस कि ये वाला वर्टिकल लिया, क्या डिमांड आ रहा है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, व्हाट इज गेटिंग सोल्ड, एंड इफ बाय कीपिंग द मिनिमल प्रोडक्ट्स इफ आई एम एबल टू सॉल्व दैट मार्केट डिमांड, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज मेरे पास स्पेस का कॉन्स्टेंट है. So, and that expansion keeps on happening. As soon as we are expanding, our warehouse capabilities are also expanding. Then we keep on improving that list. Ki abhi X number of SKUs will be live. In the next iteration, we will expand that list. So that is the idea we are working behind minutes. Anyone else? Any question more? Ji, please. My question is related to the onboarding over the Flipkart for new sellers or new production persons, right? It's quite difficult as compared to Amazon. So I just wanted to know what's the best resource over there and what's the best pathway over there. So like we have tried to make this onboarding like as simple as possible. But if there in reality or feedback is that there are gaps, so we have a booth in inside. There is a seller onboarding team who looks after onboarding. We can meet there. You can meet the team. You can highlight the issues. Why do you think that the seller onboarding process is difficult? If you have any specific feedback, that this part of the process is difficult or this part of the process, we will definitely try to solve that for you. और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी फ्लिपकार्ट से रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न अगर किसी के मन में है या कोई पूछना चाहता है तो कृपया करके हाथ ऊपर करें. थैंक यू सो मच. ठीक है, आई रिक्वेस्ट मिस्टर पवन हमारे बीच में. मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे. आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर पवन, प्लीज कम अप ऑन द डायस. वेरी वार्म वेलकम. आपके कुछ शब्द इस खूबसूरत सेमिनार में फ्लिपकार्ट के लिए और हमारे इन सभी एग्जिबिटर्स एंड ट्रेडर्स के लिए. Thank you for all of you present here and the Flipkart team. I think you must have seen the exhibition, which is really talk of the town, and our Thai team has managed it very well. And thank you Flipkart, who have supported us so much. And I request all of you to come on board to Flipkart. They have explained you all your queries. If any other question is there, so you can come up with the question, and they are there to clarify it. And thank you all, and thank you Flipkart team. थैंक यू सो मच मिस्टर पवन गुप्ता. हे इज सेक्रेटरी इन ताई. मैं चाहती हूँ पूरी हमारी ताई टीम के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस मेगा इवेंट. और हमारे बीच में हैं विपिन निझावन जी. इनका जितनी बार शुक्रिया अदा किया जाए. थैंक यू सो मच विपिन सर. और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम का, फ्लिपकार्ट का. आई होप ये सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा, आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा. एक बार जोरदार तालियां फाइनली फॉर ऑल द टीम मेंबर अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित एंड मिस्टर रक्षित. Thank you so much. That was lovely and informative session. Thank you. Wonderful is going to be a useful and informative session by government. जी हाँ, भारत सरकार का MSME मिनिस्ट्री का ये सेमिनार होने जा रहा है. जितने भी पीछे खड़े हैं, पहले आप सभी से अनुरोध है जल्द से जल्द आकर बैठ जाइए. खिलौना उद्योग का सबसे बड़ा व्यापार नवाचार, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टॉय ट्रेड फेयर 17वां संस्करण में आप सभी का स्वागत है. दुनिया के 40 से अधिक देशों से आए हमारे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, प्रदर्शकों, निर्माताओं और व्यवसायी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का इस खूबसूरत और बहुत ही प्रयोग में आने वाला, आप सबके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, आप सबके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है. कृपया करके जल्द से जल्द बैठ जाइए जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं, खिलौना उद्योग से
जुड़ी सरकारी सब्सिडी और अन्य स्कीम को जानना चाहते हैं तो ये सेमिनार आपके लिए है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यू स्टार्टअप से लेकर बिजनेस अपग्रेडेशन तक, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड या ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो ये एमएसएमई आपकी पूरी सहायता करेगा। और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज आवर प्रेसिडेंट मिस्टर अजय अग्रवाल जी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज, एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। जोरदार तालियों के साथ करेंगे मेन स्टेज पर स्वागत जी। और मैं स्टेज पर स्वागत करती हूँ हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर सुनील कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डायरेक्टर साहब का मिस्टर सुनील कुमार और उनके साथ आए सभी टीम मेंबर्स का। सो हमारे डायस पर आ चुके हैं प्रेसिडेंट साहब। सभी लोगों को नमस्कार। संख्या थोड़ी कम है क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्टॉल पे बिजी है। आने वाले जो लोग हैं वो एग्जीबिशन देख रहे हैं और जिन्होंने स्टॉल लगाया वो कस्टमर के साथ बिजी हैं। ज़्यादा समय हम आपका भी नहीं लेंगे क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है, लेकिन सेमिनार है एमएसएमई की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार इस मेले में 325 कंपनीज भाग ले रही हैं, जो टोटल में 400 ब्रांड होते हैं इंडिया के। एमएसएमई की सपोर्ट से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो हमारे को सपोर्ट कर रही है, पहली बार ऐसा हो पाया देश में और इतिहास में कि 200 लोगों को, 200 मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी मिली है यहाँ पर। इसके लिए मैं एमएसएमई मिनिस्ट्री का, सुनील कुमार जी का, भारती साहब का, डॉक्टर रजनीश का और अश्वनी लाल मैडम का, मंत्री जी का, जो हमारे एमएसएमई के मिनिस्टर हैं मांझी साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 200 लोगों को यहाँ पर जो माइक्रो के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सब्सिडी सपोर्ट करके यहाँ पर आने का एक मौका दिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर अपना माल डिस्प्ले करता है और एसोसिएशन देश और विदेश से ग्राहक को लाती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कराती है, जिससे कि वो अपने सामान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सके। तो दोबारा एमएसएमई का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया। और आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि एमएसएमई के साथ मिलकर हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को और आगे ले जा सकें। मैन्युफैक्चरर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, देश बढ़ेगा। स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से ही हो रही है। आज हर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहता है। फैक्ट्री की स्केलिंग अप करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, कंप्लाइंस को करना होगा, जिससे दुनिया के हर कोने में हम माइक्रो इंडस्ट्री का माल पहुंचा सकें। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में सुनील जी का, इनकी टीम का, इनके ऑफिसर्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 2 मिनट का टाइम हम सुनील जी से और चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एमएसएमई की स्कीम के बारे में यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बताएं कि इससे क्या फ़ायदा हमें और हो सकता है, क्या ऐसी स्कीम है, और संक्षेप में बताएं जिससे कि सभी लोग अपने काम का समय निकाल कर यहाँ आएँ, वो अपने काम में और व्यस्त रह सकें। तो धन्यवाद सुनील जी, प्लीज़ 2 मिनट आके लोगों को अवलोकन बताएं या स्कीम के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। मंच पर आसीन अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डियर एंटरप्रेन्योर्स, I welcome you all for participation in this introduction session on MSME schemes. बेसिकली एक कहावत होती है, जिसको जो जानकारी सही समय मिल जाए तो आदमी आगे बढ़ जाता है, जिसको नहीं मिलती आदमी पीछे रह जाता है। मैं इसीलिए आपके बीच में 10 मिनट आपके ले रहा हूँ, जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं जिसके तहत ये फेयर लग रहा है, ये और बहुत सारी जो स्कीम्स हो जिनका फ़ायदा लेकर के अपने बिजनेस को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, मैं उसका डिस्कस आपके साथ करूँगा। हमारा ऑफिस दिल्ली में ओखला के अंदर है और ब्रांच ऑफिस हमारा कर्नाटक प्रदेश में है। बेसिक गेम ये कि एमएसएमई को हम कैसे आगे बढ़ें। एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सेक्टर है। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं और 110 मिलियन ज़्यादा लोगों को रोजगार देती, इसलिए हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर का हो। ये हमारी एमएसएमई की काफ़ी सारी हमारी स्कीम्स, इंसेंटिव्स हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कैसे करें, कहाँ पे करें, उसी जानकारी हम आपको देते हैं। कोई आपको उद्यम रजिस्टर कराना है, वो हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी डिटेल प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। कोई भी आपको इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग करनी है, उसकी हम आपको 75% ग्रांट हम आपको देते हैं।
आपको माल गवर्नमेंट सप्लाई करना है, उसका रजिस्ट्रेशन हम आपका करते हैं। आपको कोई भी ट्रेडमार्क लेते हैं, पेटेंट लेते हैं, डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन सब की ग्रांट हम आपको देते हैं। इसके अलावा और भी जो भी रिलेटेड इशूज इंडस्ट्री के होते हैं, उन सब की जानकारी और सब्सिडी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये एमएसएमई की एक रिवाइज डेफिनेशन, अगर आउट प्लांट मशीनरी की वैल्यू आपकी 2.5 करोड़ है और 10 करोड़ का आप टर्नओवर से कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। अगर आपकी 50 करोड़ इन्वेस्ट प्लांट मशीनरी है और 100 करोड़ आपका टर्नओवर है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 125 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ आप टर्नओवर से कहते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्री। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन इसीलिए है ताकि हम जो हमारी इंडस्ट्री है हम उसके माइक्रो को ज़्यादा सब्सिडी दें, स्मॉल को उससे कम और मीडियम को उससे कम। तो दिस इज डेफिनेशन फॉर दी एमएसएमई स्कीम। और ये स्कीम आपकी जो आपका रजिस्ट्रेशन है हर साल ये चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। एक हमारा चैंपियन पोर्टल है, ये उद्यम, अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेना है, कुछ भी काम आपको करना है, यू मस्ट हैव एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खाली MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पे जाइए या माई MSME में जाइए, यू कैन गेट ऑल दी बेनिफिट थ्रू दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये हमारे काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक हमारा चैंपियन पोर्टल है। अगर सरकार से कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, सरकार से कोई जानकारी आप देना चाहते हैं या कोई आपकी ग्रीवेंस किसी डिपार्टमेंट से, तो यू कैन पुट योर ग्रीवेंसेस, योर सजेशन ऑन द चैंपियन पोर्टल एंड यू विल गेट योर आंसर विद इन 72 आवर्स। इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। किसी डिपार्टमेंट कोई शिकायत है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई देना चाहते हैं, इज ओपन फॉर ऑल। दूसरा डिले पेमेंट एक्ट होता है। अगर आप कोई भी आपका माल कहीं सप्लाई करते हैं और 45 दिन तक आपकी पेमेंट नहीं देता, यू कैन पुट योर ग्रीवेंसेस ऑन दिस डिले पेमेंट समाधान पोर्टल। इसके अलावा अगर आप 10 करोड़ तक का लोन आप लेना चाहते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, तो अंडर दिस CGTMS यू कैन अवेल दिस क्रेडिट फैसिलिटी अंडर दिस CGTMS स्कीम। इसके अलावा हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी होती है, वो ट्रेडमार्क होता है या आपका बारकोड होता है। अगर आपका कोई भी निशान है जिससे आपकी आइडेंटिटी है, हम ट्रेडमार्क 10,000 रुपये पर ट्रेडमार्क आपको देते हैं, एंड नंबर ट्रेडमार्क। बारकोड का पैसा आपको देते हैं। नए डिजाइन मार्केट में आता है उसके पैसे हम आपको देते हैं। इवन डिजाइन का 40 लाख तक का प्रोजेक्ट है उसके 75% ग्रांट हम आपको देते हैं, जो कि हर समय नया दिखता है, नया बिकता है, आपने देखा होगा। तो अगर नई चीज़ आप बनाना चाहते हैं, नई डिजाइन आप पेश करना चाहते हैं, तो यू कम थ्रू दिस MSME स्कीम। तो खिलौनों में तो पार्टिकुलरली नए डिजाइन हमेशा चलते हैं। आपका कंसल्टेंट का खर्चा, टूल एंड डाई का खर्चा और टोटल बनाने का खर्चा, उन सब की जानकारी हम आपको इस स्कीम के तहत हम आपको देते हैं। पेटेंट का आपको 1 लाख से 5 लाख तक का देते हैं, डिजाइन में 15,000 देते हैं और डिजाइन के लिए 40 लाख रुपए तक हम आपको प्रोजेक्ट आपको कवर करते हैं। एक स्कीम में बहुत ही काम की आपकी MSc CDP। अगर आपकी 10 इंडस्ट्रीज हैं टॉय की, उनके लिए 90% ग्रांट सरकार देती है फॉर सेटिंग अप कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, कॉमन रॉ मटेरियल बैंक, कॉमन पैकेजिंग फैसिलिटी, कॉमन आपकी R&D फैसिलिटी, कॉमन आपकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी, व्हाट एवर यू वांट टू सेट अप, इट इज अप टू यू। तो ऐसी स्कीम जिसका 90% ग्रांट सरकार देती हो और मालिक आप, ऐसी कोई नहीं है सरकार की, इट इज नोन एज MSc CDP स्कीम। अगर आप कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस MSc CDP स्कीम। अगर आपकी इंडस्ट्री 20 से जाता है, उस केस में आपकी सब्सिडी 30 करोड़ तक की होती है ग्रांट ये, जिसके अंदर 70 15 15 की इसकी एक क्राइटेरिया होता है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी सरकार की किसी भी सरकार को स्कीम होगी। अगर आप कोई भी ग्रुप में कोई काम आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस MSc CDP स्कीम। ये सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जेड के अंदर आप जेड आप चाहते हैं, जीरो इफेक्ट, इसके अंदर 90% ग्रांट हम आपको देते हैं। आपकी अगर आप चाहते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री के अंदर जेड सर्टिफिकेशन करें, 90% ग्रांट सरकार आपको देगी और कंसल्टेंट आपके घर पे आके काम करेगा। तो अगेन इट इज़ वेरी गुड स्कीम। इसके अलावा ये हमारी 80, 60 और 50% तक की हमारी ये इसकी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आप लीन में जाना चाहते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग में, मैं बहुत फास्ट शुरू कर रहा हूँ उसको। लीन मीन्स पतला। अगर आप अपनी जो भी आपकी मैन्युफैक्चर प्रोसेसेस हैं
उसके अंदर अनवांटेड जो आपके उनको डिले हटा देते हैं। जैसे आदमी बहुत मोटा, इसमें बहुत ज़्यादा फैट, अगर उसका फैट हट जाए वो आदमी एक्टिव हो जाता है। लाइक वाइज वन अडेप्ट चाइनीज छोड़ कर जैपनीज स्टैंडर्ड है हमारे, चाहे वो 5S है, 6 सिग्मा, पोका योकी, JIT, TQMN, ये सारे स्टैंडर्ड अगर अपनी इंडस्ट्री में आप अडेप्ट करना चाहते हैं, इनके अंदर भी आपकी सरकार आपको 90% की ग्रांट आपको देती है। 2,04,000 तक कंप्लीट एडवांस का होता है। आपके डोर स्टेप पे कंसल्टेंट आएगा, आपका काम करेगा, एंड यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लीन स्कीम, जो आपका एक सिस्टमेटिक अगर आप काम करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो मेरी निवेदन आपसे यही है कि आप लोग इसमें आगे आएँ और इसका फायदा लें। इसके अलावा अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं साल में 2 बार, अंडर दिस IC स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम होती है, जो भी विदेश में फेयर लगते हैं, किसी भी कंट्री में फेयर लग रहे हैं, आप वहाँ जाइए, उसमें पार्टिसिपेट करिए। हम आपको 5 लाख पर फेयर हम आपको पर MSME आपको रिम्बर्समेंट कर देते हैं, जिसमें 3 लाख आपका स्पेस रेंट होता है, 1.5 लाख आपका एयरफेयर होता है, 50,000 आपका कंटीजेंट होता है। तो यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। इसके अलावा जो हमारा जिस स्कीम के तहत फेयर लगा हुआ है, जिसको कहते हैं PMS स्कीम, PMS के अंदर अगर आप कोई भी किसी MSME के फेयर में पार्टिसिपेट जो हमसे अप्रूव्ड है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक हम आपको रिम्बर्स करते हैं, जिसके अंदर स्पेस रेंट होता है, आप आने जाने किराया होता है, पब्लिसिटी का मटेरियल का होता है। तो आप इसका भी फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी स्कीम आपकी MSME की है कि आप लोग 80% आपका जर्नल के लिए और वीमेंस SC/ST 100% हम आपको रिम्बर्समेंट स्कीम में देते हैं, जिसका ये फेयर लगा हुआ है। तो जिसको भी कोई जानकारी लेनी है कि हम इसका रिम्बर्समेंट कैसे लें, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है और हार्ड कॉपी हमारे पास जमा करनी पड़ती है इसकी। और साल में 2 बार एक इंडस्ट्री किसी फेयर में पार्टिसिपेट कर सकती है एनीवेयर इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्कीम में आप जाना चाहते हैं, सिर्फ माई MSME आप लिखिए, नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट राइट माई MSME। उसके तहत आप सारे जो भी स्कीम्स हैं, इंसेंटिव सारे आप यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, अब मेरे बीच में मिस्टर रवि हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि आज के ज़माने में, आज का ज़माना ऑटोमेशन का है, AI बेस्ड का है, तो हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ AI एंड इनोवेशन एंड ऑटोमेशन। मिस्टर रवि, मिस्टर रवि, मिस्टर धिंगड़ा, बताइए अपने बारे में, क्या आपका हाउ कैन बेस्ट दी MSME। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इनविटेशन और थैंक यू चेयरमैन साहब, मैम, सर। तो बेसिकली जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट इस टाइम पे टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा फोकस एरिया है, वो ग्रोथ के नंबर्स में भी दिखता है। आई थिंक इस बार हमारा ऑलमोस्ट 300% एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हुआ है इंडिया से बाहर। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में देर आर एडिशनल थिंग्स दैट कैन बी डन उस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी टॉयज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कैटेगरी है, अगर हम एक्सपोर्ट करें तो सर्टिफिकेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हम ऐसा क्या दे सकते हैं फॉर विजिबिलिटी कि इम्पोर्टर्स जो है उसके लिए कंफर्टेबल रहें। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिजिटल ट्विंस का यूटिलाइज़ करें टॉय मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारा वो हम शोकेस कर पाएंगे कि क्या हम पैरामीटर्स रख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। सेकेंडली जो एडवांटेज रहेगा आपका ब्रेकडाउन रिडक्शन। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं या कोई भी मशीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर सरप्राइज डाउन टाइम होता है तो प्रोडक्शन लॉस होता है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं ऑर्डर्स टाइमली डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है यूजिंग IoT, तो वो किया जा सकता है। थर्ड थिंग है, कहीं ना कहीं अब यूरोप में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी का बहुत महत्व है। कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो ट्रेसेबल वे में हमें दिखाना पड़ेगा, तो ये हमें एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड लास्ट है सेफ्टी सिक्योरिटी, बोथ प्रोडक्ट की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सो ये 4 पिलर्स हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। टॉय मैन्युफैक्चरर्स को भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर अदरवाइज़ हम एक बैकग्राउंड दें तो सैमसंग, HP, पैनासोनिक, सुजुकी, इस तरह की कंपनीज़ में हमने काफ़ी ये सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करके उनको हेल्प किया डाउन टाइम रिडक्शन में।
और क्वालिटी कंट्रोल को एनहांस करने के अंदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे टॉय मैन्युफैक्चरर्स वर्क कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, इफ़ दैट्स ओके विद एवरीबॉडी। अनिकेत, कैन यू जस्ट अ सेकंड। जब तक हमारा वीडियो कनेक्ट होता है तब तक हम स्वागत करते हैं सुनील कुमार जी का। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब अजय अग्रवाल जी से वो फ्लोरल वेलकम करें। डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिस्टर सुनील कुमार। जोरदार तालियां, एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। ढेर सारी स्कीम्स के साथ आए हैं और उनकी पूरी टीम का स्वागत है। और रचना मैम हमारे बीच में है। रचना मैम का बहुत बहुत स्वागत। वेरी वार्म वेलकम ऑन द स्टेज। प्रेसिडेंट साहब बुके देकर उनका फ्लोरल वेलकम कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है। ये जुड़ाव है, ये बीच की दूरी को कम करता है और इसी के साथ ही हम एक साथ बढ़ रहे हैं। ग्लोबली आज भारत धाक जमा रहा है। 150 देशों में भारत का खिलौना जा रहा है, जिसके पीछे आप सभी की मेहनत है। मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। वंदे वंदे। और मैं बता दूं अजय अग्रवाल जी 11th टाइम कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट है। ये बताता है किस तरह से वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं और इस एसोसिएशन को हर साल दर साल हमारी जो छवि ग्लोबल लेवल पर आई है वो हम सभी जानते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार प्रेसिडेंट साहब के लिए जोरदार तालियां। वेरी वार्म वेलकम सर। आज भारत किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर। और ख़ास तौर से आज हम बात कर रहे हैं हमारे खिलौना सेक्टर की, खिलौना उद्योग की। खिलौना उद्योग के लिए मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियां, जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज। सो आपकी स्क्रीन पे अभी जो आप देखेंगे वीडियो प्ले करके, इससे पहले नीचे प्ले का बटन होगा। सो अभी आप जो स्क्रीन पे देखेंगे आप मारुति सुजुकी का प्लांट जो है वो लाइव विजिबल आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे। सो जैसा प्लांट में मशीन अगर ऑन है तो यहाँ पे भी मशीन ऑन है। अगर प्लांट में एक इंसान ए से बी जगह पे जा रहा है तो यहाँ पे भी ए से बी जगह जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली आप मशीन के अंदर भी विजिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे ये प्रेस मशीन है, सो किस फोर्स पे प्रेस हो रहा है, SPH PVA सारे पैरामीटर्स भी आपको विजिबल हो रहे हैं। यानी अपनी एक फैक्ट्री का बिल्कुल लाइव विजिबिलिटी परफॉर्मेंस की, जिसमें KPIs आ जाते हैं, कॉस्ट के, क्वालिटी के, प्रोडक्शन के KPIs आ जाते हैं, रॉ मटेरियल की मूवमेंट्स आ जाती हैं। सो एक कंप्लीट फैक्ट्री की आपको विजिबिलिटी मिलती है। ना सिर्फ ये आपको अपनी मशीन्स को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, जैसे डाउन टाइम रिडक्शन में हेल्प करते हैं, क्वालिटी एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं, बट ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस देते हैं MSME होने के बाद भी वो वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगे जो ग्लोबल लेवल पे compete कर पाए और इम्पोर्टर्स को वो कॉन्फिडेंस दे पाए। बेसिकली यहाँ पे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मोटर की एक विजिबिलिटी है, जो सिस्टम प्रिडिक्ट कर रहा है बॉटम राइट पे कि फ्यूचर में मोटर ख़राब हो सकती है क्योंकि वाइंडिंग्स के अंदर हीट जनरेट हो रही है। सो इवन आप कंपोनेंट लेवल पे आप अंदर जाके उसको विजिबिलिटी के साथ देख सकते हैं। सो कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं यहाँ लेफ्ट में ट्राई आउट करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल कैमराज हैं, कुछ IoT सेंसर्स हैं जो स्काडा सिस्टम्स के साथ आपके इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें करने में हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू विजिट एंड ट्राई दोज आउट। Thank you so much. That was my time. Really grateful for MSME and the Toy Biz Association for this. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपका कोई भी सवाल है कृपया करके पूछिए और इन शॉर्ट पूछिएगा। MSME से रिगार्डिंग कोई भी आपका प्रश्न है, किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी तरह की ऐसी स्कीम जो PMS के अंतर्गत आती है, अपना हाथ ऊपर उठाकर अपना प्रश्न पूछिए। जी प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो सर। हेलो।
मैं सर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ मतलब दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन बैंक लोन नहीं देती है। बोलती है कि आप पहले सेटअप करके आओ। SBI में मैं कस्टमर रह चुका हूँ, उसी ब्रांच में गया था, लेकिन वो लोन नहीं दी। वो बोले कि आप पहले सेटअप करके आओ, सेटअप देखेगा यहाँ का टीम जाके, तो आपका लोन ग्रांट होगा। बेसिकली अगर आप बिना किसी स्कीम के बैंक के पास जाएंगे तो बैंक भी आपको परेशान करेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, बैंकर्स की, चाहे वो PMEGP हैं, मुद्रा है, स्टैंड अप है, स्टार्टअप है। अगर आप स्कीम का नाम लेकर जाएंगे बैंक आपकी सपोर्ट करेगा। आपको कितना लोन चाहिए? मैंने बोला था सर कि मुद्रा लोन में मुझे आप तरुण या शिशु में आप कुछ दे दीजिए, 50,000। तरुण शिशु उसी का पार्ट है मुद्रा का ही। तो वो PMEGP के अंदर 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट आप बना के जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आज की डेट में। यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। PMEGP KVIC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल पर आप अप्लाई करिए, इट विल गो टू द बैंक, ऑटोमेटिक आपको 50 लाख रुपए तक, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर सर्विस करते हैं 20 लाख तक का है। ठीक है, थैंक्स सर, यही पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अन्य जो पूछना चाहते हो सवाल, कृपया करके हाथ ऊपर करके बताएं। अगर आपके मन में MSME के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है तो हाथ ऊपर करके बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अरीशा है सर। मैं कोई उद्योग टॉय एसोसिएशन में नहीं हूँ, बट आई एम इन द कंसल्टिंग फील्ड इन द स्किलिंग स्पेस। सर जैसे कि आप बात कर रहे थे कि देयर आर लॉट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो MSME डिपार्टमेंट ने लिए हैं कि बिजनेस जो MSMEs है कैसे वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर हो जाए। तो सर इसी हिसाब से अगर मतलब आई थिंक यहाँ पे सब लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि सबको बाहर एक आगे जाके बढ़ने की एक उत्सुकता होती है। तो सर जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एग्जिस्टिंग जो इनिशिएटिव्स MSME ले रहा है, तो क्या उसके अंदर कोई ग्लोबल एक्सपर्ट्स आते हैं जो मतलब MSMEs को समझाते हैं कि किस तरह से आपको रेडी होना है इन ऑर्डर टू मूव आउटसाइड? तो सर मे बी यू कैन शेयर अ लाइट ऑन दैट। बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए MSCD सबसे अच्छी स्कीम जो मैंने बताया था आपको। इफ़ यू वांट टू कम टुगेदर, यू कैन वांट टू वर्क इन ए ग्रुप, यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ MSCDP। क्यों? कैपेसिटी बिल्डिंग उसके थ्रू बनती है, बिकॉज यू आर कमिंग टुगेदर। दूसरा, इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट, तो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ IC स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। अंडर दिस स्कीम यू कैन विजिट वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, you listen them what kind of capacity, quality, price, what they are choosing. You can avail the benefit under this IC scheme for international market. कोई अन्य सदस्य, कोई अन्य एग्जिबिटर, ट्रेडर कोई पूछना चाहते हैं? जो एग्जिबिटर जिन्होंने PMS में अप्लाई किया है हमारी स्कीम में, MSME जिनको सब्सिडी चाहिए, उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि फेयर ख़त्म होने के तुरंत बाद 1 महीने तक पोर्टल आपका खुला है। आप अपनी ओरिजिनल इनवॉइस, रिसिप्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप पोर्टल अपलोड कर दें और हार्ड कॉपी हमको जमा, ताकि हम आपको बेहतर समय से आपको रिम्बर्स कर सकें। जी प्लीज बताइए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके का जो आयोजन करवाया है। और मुझे मतलब ये पूछना था सर कि ये जो जैसे MSME है और कोई फर्स्ट टाइम जैसे इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा हो, तो कुछ बेसिक चीज़ बता देते जिससे कि मतलब हम लोग भी इन चीज़ों से जुड़ सके और इसका यूज़ कर सकें। नहीं, बेसिक पूछो। हाँ बेसिक सर, मतलब जैसे IP अभी आपने दिखाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं मतलब कैसे कोई हेल्प करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म या कुछ हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नो नीड टू गो एनी कंसल्टेंट। आपको कहीं मत जाओ, किसी की सलाह मत लो, राय मत लो, किसी को पैसा मत दो। जस्ट राइट माई MSME इन गूगल, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप, कंप्यूटर माई MSME लिखिए। अब सारी पोर्टल आपके मैंने दिखाई थी, उसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्स खुल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, उधर रजिस्ट्रेशन, वहाँ से क्लिक हेयर, उसको क्लिक करिए, आपको एकदम वहीं हो जाएगा। स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, PM स्कीम खोलिए, वहीं आपका इसका फ़ायदा मिल जाएगा। डिजाइन जाना, डिजाइन क्लिनिक स्कीम खोलिए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। क्लस्टर का फाइल लेना है, MSCDP खोलिए, वहाँ से। तो हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर आप ट्रेडमार्क या चीज़ लेनी है आपको, IPR खोलिए, उसका फ़ायदा वहाँ से मिल जाएगा। हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ बहुत सिंपल वे में। जस्ट राइट माई MSME इन गूगल। सर वो जो जानकारी है वो मतलब एज अ
रिटर्न जो होता है उसमें है या वीडियो के थ्रू कुछ? जब आप इसको MyMSM उसको खोलोगे पोर्टल को, जो बॉक्स है उसके अंदर पहले स्कीम गाइडलाइन है, उसके बाद एप्लीकेशन है, फिर भी समझ नहीं आता, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सुनील सर हमारे बीच में हैं, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो MSME से रिलेटेड हो। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। कोई क्वेश्चन नहीं